We hereby are starting with online session. And for first presentation, I would like to call Rini Rubina Singh. I request all the presenter to abide by the rule. There is only 5 minutes for your presentation. Just a minute. I just hope the judges have joined. Dr. Rekha Agrawal. Okay. Yes, I have joined. And Dr. Rachna Thakur. Yes, ma'am. I am also there. Okay, so we are starting the presentations from here. Fine. Rini Rubina Singh from Rani Durgavati Vishwavidyalaya. Is she present? Rini Rubina Singh. Yes, ma'am. You can start with your presentation, Rini. Okay, ma'am. Ma'am, shall I have to share the screen, my PPT? Yes, please do it. Okay. As a next speaker, Ms. Suman Upadhyay, please be ready. Ms. Suman Upadhyay from Department of Chemistry, Government Science College, Jabalpur. Please be ready after the presentation of Rini Rubina Singh. And please stick by the time of 5 minutes. पार्टिसिपेंट हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है स्क्रीन शेयर करने में तो आप ओरल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं विदाउट शेयरिंग योर स्क्रीन। थैंक यू। Sorry, ma'am, I'm Dr. Seema Tekate. If nobody is there, can I speak? Just give us a minute, please. Okay. Ms. Suman Upadhyay, are you there? Kanak Chaudhary. Ms. Kanak Chaudhary. Mr. Ranvijay Singh. Vinakshi Sethia. Just a minute, please. Good morning, ma'am. Vinakshi Sethia. Yeah, good morning, ma'am. I'm You are Vinakshi from Sethia. ATS. Fine. Are you ready? Yes, ma'am, I'm ready. But there is a privacy for screen sharing. Okay, just a minute. Yes, ma'am. Please screen share. I think it's done now. Vinakshi, No, please ma'am. check. No, ma'am. I will request the operators, please make the mode active for presentation, individual presentations or screen sharing. ब्रजेश जी अलाउ कीजिए जरा इनको स्क्रीन शेयरिंग के लिए। यस सर, अलाउ है सर। ओके, अलाउ है। अविनाक्षी जी करिए इसको शेयर एक बार। Just sir, I'm checking. देखने allow है क्या नहीं है ना? No, ma'am, it's not allowed.
मीनाक्षी, यदि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो आप ओरल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. Okay, sir. Okay. Okay, you can start. Okay, sir. My topic is Bridging Access and Excellence, NEP 2020, Role in the Inclusive Quality Higher Education. I am Vinakshi Sitakurana from the AKS University, Satna. Today, my topic is that Bridging Access and Excellence, NEP 2020, Role in the Inclusive Quality Higher Education. So, firstly, I will say that the NEP 2020 promotes access, quality, and inclusion, focus on the multidisciplinary and digital education flexible learning system. The first I introduced my paper, then it's higher education drives national development. NEP 2020 supports learner-centered education and it encourages creativity and innovation. There are the four pillars that background of NEP 2020, that is access, equality, quality, and accountability. So the objectives of this, it expand access, it improve excellence, it promote equality, identify challenge, and suggest reforms. There are the methodology that we use, that is descriptive and analytic. I use the secondary data and literature reviews. Access to education is that institutional expansion, multiple entry exit, and digital learning. Then after I will show that there the NEP policy, there are the access to education, and after that quality excellence is to be defined. That is multidisciplinary learning, regulatory reforms, and faculty development. If I say that the inclusion and equity is that the support for SC, ST, OBC, and women minorities, and language inclusion is also defined. There are some challenges, that is financial limit, digital divide, resistant to change, and quality issue. For the recommendation, that is increase funding, it improve the infrastructure, it faculty training also we want, and the good governance is also we want. After we conclude that the NEP 2020 can transform higher education, that need stronger commitment and monitoring. Thank you so much. Thank you, Vinakshi Sethia ji. I request the judges, the now serial number is 34 in the participants list. Take care of that. For next presentation, I would like to call upon Mohit Patel, Ms. Shivali Rai, Yes, ma'am. Shivali Rai, are you present? Yes, Please ma'am. go Yes, ahead. ma'am. Ms. Shivali Rai is a research scholar from Government Science College, Jabalpur. And she is going to present her topic on culture and consciousness in Sri Aurobindo's literary thought, an Indian knowledge perspective. Ms. Shivali Rai, please go ahead. Yes, ma'am. Ma'am, is the screen visible? It's visible. Okay. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. I'm going to present my paper on culture and consciousness in Sri Aurobindo's literary thought and Indian knowledge perspective. Firstly, I'll begin with Sri Aurobindo Ghosh. He was one of the India's greatest philosopher, poet, and spiritual leader of the 20th century. He he pioneered the concept of integral yoga and holistic vision of consciousness. He's the author of The Life Divine, The Human Cycle, The Foundations of Indian Culture. In his work, he has synthesized Vedic and Upanishadic wisdom with modern challenges, modern science, and rationalism. He often saw culture as a living force or the center of human evolution. According to him, culture is a dynamic process, not a static process. According to him, in his vision, literature acts as a medium of spiritual and cultural transformation. My aim is to situate Sri Aurobindo's thought within Indian knowledge system. Next, I come on to Indian knowledge system. Indian knowledge system represent over 5,000 years of intellectual, cultural, and spiritual heritage which has been passed on from generations to generation.
Thinkers like Chanakya in political thought, Panini in linguistic, and Sri Aurobindo as a act as a modern philosopher. And according to him, uh, IKS act as a is not is just indigenous in origin, but also evolving in higher consciousness. Um, Now he come on to the culture. He talks about culture as a living process of evolving awareness. His thoughts are deeply rooted in Vedic and Upanishadic unity. He engages with modernity, science, and Western rationalism. He offered he synthesized the ancient Indian wisdom with modern rational thought and offered a framework that remains deeply relevant even today. According to him, literature is not mere aesthetic representation, but it helps in reshaping values, nurturing higher awareness. The myth, symbol, history, philosophy converge in his writings and act as a force of awakening to express profound truths. He also critiques the Western philosophy for equating mind with spirit and limiting consciousness to only mental awareness and viewing body as unconscious. According to Aurobindo's theory, he gives a hierarchy of starting from physical body, vital, emotions, mental, psychic, and spiritual awareness. According to him, progress is not only can only be gained by political or economic growth, but by actual inner transformation. Your Val- 5 minutes. Ms. Shivali, your 5 minutes yes, is ma'am. kindly Okay, ma'am. conclude. Okay. Ma'am, according to him, culture acts as an art of living, a balance of spirit, mind, and body. I'll just conclude. According to Aurobindo's Ghosh, evolving culture is evolving consciousness, not a fixed inheritance. And he views his integral vision focus on literature, ethics, society, and spiritual interconnectedness. Thank you, ma'am. Thank you, Ms. Shivali. Our next speaker, I would like to call upon Ms. Neha Srivastav. Ms. Neha Srivastav. Anita Gajbhia. Ms. Anita Gajbhia. Mr. Mohit Patel. Yes, अनीता ma'am. गजबिया ने कल प्रेजेंटेशन दे दिया था. Okay. Hello. Good morning, ma'am. Mr. Mohit Patel, he is present here. We Yes, will ma'am. start with you, Mohit. Yes, ma'am. Mr. Mohit Patel, he is research scholar in Government Science College, Jabalpur. He is putting up his thought on innovative pedagogical practices for teaching chemistry under NEP 2020. Shall I Mr. Mohit, start? yes, your time is 5 minutes. Please start. Yes, ma'am. My review article topic is innovative pedagogical practices for teaching chemistry under NEP 2020. Starting with introduction. NEP 2020 promotes learner-centric and skill-based education, emphasizes on creativity, critical thinking, and technology integration, need to reform traditional chemistry teaching methods. Next, objective of the study, review innovative teaching strategies in chemistry, align chemistry education with NEP 2020 principles, suggest implementation methods for teachers, improve students' engagement and understanding. Need for innovation in chemistry teaching. First, traditional lecture methods limit conceptual understanding.
lack of real life application, low student participation, need for digital literacy and multidisciplinary learning. Next, NEP 2020 key features relevant to chemistry. First, experimental learning, multidisciplinary approach, technological integration, continuous assessment, skill-based education. Blended learning, combinations of online and offline teaching, use of video quizzes, benefits, flexibility, and better concept clarity. Flipped classroom. Student learn theory at home via videos, classroom time used for problem solving and discussion, improve critical thinking and participation, inquiry-based learning. Student explore and investigate chemical concepts, encourage questioning and curiosity. Example, designing small experiment. Problem-based learning, virtual laboratories, use of simulations for experiment, useful where lab facilities are limited, safe, repeatable, and cost effective. Next, collaborative learning, group projects and peer teaching, enhance teamwork and communication. Example, group research presentation on nanomaterials. Context-based learning, connect chemistry with daily life. Examples, food chemistry, environmental chemistry, medicines. Improve relevance and interest. Assessment reforms, continuous and competency-based evaluation, open book test, focus on skill rather than learning. Role of technology and AI, smart classroom and simulations, AI tutor and adaptive learning system, data analysis tool in research-based learning. Challenges in implementation, lack of teacher training, limited digital infrastructure resisting to change, large classroom size. Recommendations, teacher training workshop, government support for digital labs, curriculum redesign, collaboration between institutions. Conclusion, innovative pedagogy improves chemistry teaching, aligned with NEP 2020 vision, prepares students for research and industry, future AI integrated and skill-based chemistry education. Thank you. That's good, Mohit ji. I request you to mute yourself, please. Yes, ma'am. Our next speaker is Neha Shrivastava. Is she present? Miss Neha Shrivastava. Miss Vidushi. Miss Vidushi from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar, Uttarakhand. Next, Krishna Singh Raghuvanshi. Yes, ma'am. Who is this? Hello. Krishna Singh Yes, ma'am. Raghuvanshi. Myself, Krishna Singh. Yes, ma'am. Myself, Krishna Singh Raghuvanshi. Please be ready for your presentation. Krishna Singh Raghuvanshi, he is student of BSc earlier from Government Science College, Jabalpur. We'll be speaking on integrating bioinformatics and digital tools in biotechnology education to enhance learning outcomes under NEP 2020. Mr. Krishna Singh Raghuvanshi. I hope my slide is completely visible to you. Yes, it's visible. Yes, ma'am. So I would like to start my topic with the brief introduction and background for my topic. So I hope it is now completely clear and visible. Yes. Yes, So please the go ahead. introduction and background. So, according to the NEP 2020, which emphasizes on the outcome-based and digital education. Here, in the biotechnology field, it is a data-driven and research-intensive field. Here, we need a very improvised statistics and work outlook for the biotechnology applications. Here, what
the lag behind in the biotechnology, especially in the bioinformatic application, it's a computational exposure, because the computational exposure gives you a higher integrated value and also a digital tool which helps you in development of the skills and interdisciplinary learning. Here, the quality higher education under NEP 2020, which promotes digital platforms and blending learning, also encourages research integration and experimental learning. Here, I would like to emphasize on research integration with experimental learning, because in now times where the research is going with the speed of light, we always have to be very fast, quick, and understanding about what the current research is going through and what are the benefits and key understandings which we really need to highlight. Here, the quality higher education under NEP, which provides the flexible curriculum and multidisciplinary learning, which helps in outcome-based assessment, which is a very, very important aspect of research. Here, I would like to enhance on the accessibility and inclusivity which quality higher education under NEP 2020 promotes on a very large scale. Here, the student, every understanding of higher education is for the student, to the student, and always for the student. Students need to understand that this NEP is all about their understanding for the subjects and how they can help get benefits from this education system. So, role of bioinformatics. So now I would emphasize on the role of bioinformatics. So bioinformatics is an interdisciplinary field which merges biological complex data, mathematical and statistical calculations to interpret, analyze, and also understand the basics of biological data. Here, the DNA, RNA, and protein sequencing data are very large, complex, and highly intensive to study all around. To understand the data for this, which are we need the virtual experiment and the data interpretation skills. Here, the development for both analytical and computational skills are just very much required, because until and unless you have a computational skill, you can't achieve to the databases and you can't retrieve any data. And after you are retrieving any data, there have to be a critical and analytical thinking which you have to improvise on that particular thing, which bridges the gap between theory and research. In a simple line, if you are doing something biological complex data, then if you are conducting it with a bioinformatics part, then your research will go from there to there. Here, the hybrid learning and skill development, which blends learning of online and offline. Here, the problem based on inquiry driven learning enhance the employability in biotech and pharma sectors. Also, there are many more, but the pharma sector, which has been highly improvising in our recent times, so I am like to mention it out. Support measurable learning outcomes. Also, the challenges and conclusions which are being facing out throughout it is faculty training and rigid curriculum. Also, the infrastructure, there are a lack of these things which can be the problem in current times. Needed for curriculum reforms and institutional support. Also, the faculty development program essentially needed for the implementation of this program. Bioinformatics strengthens digital competency and support NEP 2020 vision for quality higher education. Also, I would like to mention the few references like Mishra S and Bhandari V. If anybody likes to understand this concept in a very detailed, then you can refer to the following references I have mentioned in my paper. I would like to conclude my slide by thanking to IQAC for conducting this seminar, also the Government Science College Principal Ma'am, also the Faculty of Zoology and Biotechnology for their continuous support. Thank you. Thank you, Krishna. Thank you, ma'am. I would like to call upon again the left talks. Number 1, Rini Rubina Singh. Is she present? Kindly let us know if you are present there. Rini Rubina Singh. Yes, ma'am, I'm present. Actually, I'm Ms. Suman facing Upadhyay. some network issue right now Mr. in my Ranbajay area. Singh. Ms. That's Neha why I'm. Srivastav. Hello. Ms. Rini Rubina Singh. Yes, ma'am. Actually, I'm facing network issue right now in my area. That's why I was unable to present my paper earlier. You're audible. Yes, ma'am. Can you give your presentation right now?
Yes, ma'am. Sure, ma'am. I will try my best. You can skip the screen sharing. Rini, you are very well audible. You can present your paper without sharing your screen. Yes. Hello. Good morning, respected teachers. I am presenting my paper titled Indian Knowledge System as a Tool for Cultural Sustainability, a subaltern reading of Dalit life narratives. I am Rini Singh from Rani Durgavati Vishwavidyalaya. So, the study explored how Dalit life narratives function as an alternative knowledge system within Indian knowledge system. Indian knowledge systems are often understood through elite and Sanskritic traditions. However, such an approach excludes subaltern and experiential knowledge. This study reads Dalit sustainability rather than practices not only classical text, and cultural sustainability refers to preserving culture through adaptations and transformations. The subaltern perspective focus on marginalized voice excluded from dominant discourses and knowledge productions. Primary text, the study focus on two primary texts like Jhutan from Om Prakash Valmiki and Urmila Pawar's The Weave of My Life. The theoretical framework, this study draws on subaltern theory, which questions elite historiography and emphasizes self-representations. It uses cultural sustainability to show how culture survives through memory and transformation. It also redefines Indian knowledge system to include lived, oral, and community-based knowledge. That live narrative as knowledge system. Narratives present oral memory, community practices, labor ethics, and resistance traditions. Lived experience becomes epistemology and narrative shows that culture is dynamic. Resistance itself becomes cultural knowledge. Education, storytelling, and memory help reclaim dignity and sustain culture across generations. And in findings and conclusion, Dalit autobiography function as living Indian knowledge system. They challenge dominant epistemologies and show how caste and gender shape access to knowledge. To conclude, Dalit life narratives are not just stories of suffering, they are repositories of indigenous knowledge, and cultural sustainability depends on recognizing subaltern epistemologies and including marginalized voice within Indian knowledge system. Thank you so much. That's so good of you, Rini. Thank you, ma'am. I would like to call upon now Suman Upadhyay ji. Suman Upadhyay. Kanak Chaudhary. Yes, ma'am, I am present. Kanak Chaudhary. Please go ahead with your presentation. Okay, ma'am. Ms. Kanak Chaudhary is Yes, from ma'am. Barkatullah University, Bhopal. She's a research scholar and putting up her thoughts on impact of sedative drugs on East pathogenic characters. Ms. Kanak Chaudhary. Ma'am, my slides are visible Yes, or not? your screen is visible. Starting, Do it full screen and you can start. uh, ma'am, 1 minute. I think it is not visible.
कनक आपकी स्लाइड विजुअल है, आपने विंडो शेयर किया हुआ है, एक बार पूरा होल स्क्रीन शेयर कीजिए और थोड़ा सा कंसाइज कीजिएगा अपने प्रेजेंटेशन को। 5 मिनट मैक्सिमम है आपके पास ओनली। Okay, sir. I will try. Kanak, please start your presentation. Ma'am, I think it is not sharing. Okay, by that time, I would like to confirm those who are present. Ma'am, I start. Mr. Ran Vijay Singh. Kanak Chaudhary, Ma'am, are you shall ready? I start? Hello. Yes, please, go ahead. Good morning, respected organizers and one and all present here. I am Kanak Chaudhary, research scholar, Bartullah University, Bhopal. My title is Impact of Sedative Drugs on Pathogenic Activity of Yeast and its relation with Indian knowledge system. So basically, IKS help in modern drug discovery by utilizing reverse pharmacology to validate traditional remedies or traditional knowledge with significantly reducing time and cost. Here in our study, we used some sedative drugs like barbiturate, phenobarbital, and Z drugs against pathogenic activity of yeast like Saccharomyces cerevisiae, Rhodotorula mucilaginosa, and Candida tropicalis. So here is the methodology we opted, and we investigated the MICs and bifenil inhibitory property of these drugs against yeast. We related these results with ancient knowledge which is mentioned in Ayurveda, Siddha, and ethnobotany as Yogavahi or multifunctional nature of agent. Also provides that rasayana that also act as kramigna or kushtagna, which is antimicrobial or antifungal, which primarily works on manovaha srotas, that is nervous system. So basically, इट इज सेड दैट जो मेडिसिन ब्रेन को काम डाउन करने के लिए यूज होती हैं वो कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल नेचर भी शो करती हैं. ऑल्सो मैनी प्लांट्स पजेस डुअल synergistic property acting simultaneously as neurosedative as well as antimicrobial or antifungal agent, which is also correlated with our results. So the conclusion of the study is the Indian knowledge system supports a holistic pharmacological approach where sedative drugs are often multi-target, serving to calm the mind while fighting infections through their bioactive compounds. Thank you. Thank you, Ms. Kanak. Thank you. In the next order, we have Mr. Ran Vijay Singh from MU Jabalpur. Is he present? Mr. Ran Vijay Singh. Ms. Neha Srivastav. Ms. Neha Srivastav from Government Science College, Jabalpur. Ms. Vidushi. Yes, ma'am. Ms. Vidushi, are you ready? Yes, ma'am. Ms. Vidushi is from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar, Uttarakhand. She's a student of MA History and Indian Culture. She is going to present her talk on embedding Indian knowledge systems in multidisciplinary higher education, challenges, innovations, and strategic roadmap in the NEP 2020 framework. Ms. Vidushi, you can start your talk. Please go ahead. You have 5 minutes to put up your thoughts. Okay, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning to all faculty members and participants. So my topic is embedding Indian knowledge system in multidisciplinary higher education, challenges, innovations, and a strategic roadmap in the NEP 2020 framework. Context.
So National Education Policy NEP 2020 brought this vision into light, which is to integrate Indian knowledge system in our higher education or education. So it emphasizes on multidisciplinary and holistic learning, bridging traditional epistemologies with modern discipline. So our vision is clear, but implementation remains uneven. So my objective is to examine the basis for integrating IKS within multidisciplinary higher education under NEP 2020. And it is also to analyze key challenges hindering effective IKS implementation, to assess emerging innovations supporting IKS integration, and to propose a phased strategic roadmap for sustainable and scalable implementation. So my methodology is qualitative, policy-oriented analytical approach. Key challenges: structural rigidity within university curricula, discipline-specific and semester-bound frameworks, slow and centralized curriculum revision processes, limited faculty exposure to IKS and interdisciplinary methodologies, uneven access to digitized IKS materials and institutional funding, regulatory and compliance pressure discouraging experimentation and greater impact on regional and Tier 2 institutions. So my innovations are development of digital IKS learning platforms and MOOCs, multilingual online courses on Vedic mathematics, philosophy, Ayurveda, and epistemology, hybrid and interdisciplinary curricula integrating IKS with contemporary disciplines, and courses linking classical frameworks with AI, environmental studies, and governance, and establishment of institutional IKS centers and pilot programs, regional contextualization of IKS for agriculture, ecology, and community development. So I have brought this three-phased roadmap. First one is capacity building and orientation, which is short-term phase one. Structured faculty training programs. Second is refresher courses and interdisciplinary workshops. Third is collaboration with IKS research centers. And fourth is bridging epistemic unfamiliarity. Phase 2 is medium term, which is basically based on curriculum integration. For example, credit-based IKS courses and electives in our universities, in our institutions, multidisciplinary modules, alignment with sustainability, ethics, and science. And phase third is long-term, outcome-based evaluation mechanisms, funding for empirical IKS research, institutional monitoring systems, ensuring academic credibility and policy responsiveness. So conclusion is, towards quality-centric higher education through IKS. NEP 2020 positions IKS as a transformative academic reform. Quality enhancement requires structural, pedagogical, and institutional alignment. IKS integration must move beyond symbolic inclusion. Emphasis on interdisciplinary synthesis and epistemic plurality. Need for phased, evidence-based implementation. And institutional innovation as key to sustainable reform. These are my references, and thank you, ma'am. That's it. Thank you, Ms. Vidushi. Now, I would like to repeat the names which are still remaining. Ms. Suman Upadhyay, Mr. Ranvijay Singh, Neha Srivastav. Is any of them present? So with this, we here end. We are at the end of this session of online paper presentation of research scholars and students. We have students from Rani, in this session, we have students from Rani Durgavati University,
then Government Science College, Jabalpur, Barkatullah University, AKS University, Satna, and Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar, Uttarakhand as well. Their presentations were good, and with this, we are now starting with the session of faculty online paper presentation. For this session, we are having our judges. They are present over here. Dr. Sunita Sharma and Dr. Shashi Koraria. Both judges are present here. On behalf of organizing committee, I welcome them. Okay. So with their permission, we are starting this online paper presentation of faculty members. I hereby would like to call Dr. Ragini Chauhan. Dr. Ragini Chauhan, is she present? From Pradhan Mantri Excellence Swami Vivekanand Snatkotter Mahavidyalaya, Narsinghpur. Dr. Sapna Pawar, just let me know whosoever is present. Dr. Sapna Pawar from Bilaspur, Chhattisgarh. Dr. Seema Dekate. Yes, ma'am. From Vancouver Bay. Yes, ma'am, I'm there. Dr. Seema Dekate. Dr. Sapna Pawar. Here. Okay, Dr. Seema Madam, we would like to take Sapna Pawar Madam first. Okay, okay. Dr. Sapna Pawar from Government Niranjan Keshavani College, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh. She's Professor of Chemistry. Whoa. And she's presenting her paper on skill development, employability, and industry linkages in chemistry. Judges, please note her serial number is 2. प्लीज इसके बाद ले लीजिएगा, मैं अभी इंटर कर थोड़ा सा, नेक्स्ट में ले लीजिएगा इनके बाद. Okay, fine. We are taking up Miss Dr. Seema Dekate. Are you present, Yes, ma'am? ma'am. Yes, ma'am, I'm present. I'm Dr. Seema Dekate from Government Just a Manpur minute. College. Dr. Seema Dekate, we are taking up her presentation first. Her serial number is 3. Dr. Seema Dekate from Government Yes, Vancouver ma'am. by College. She is Professor of Department of English, and she is presenting her thoughts on a new approach to higher education in India. Dr. Seema Dekate ji, you can present your thoughts, and please Okay, ma'am. abide by 5 minutes. Thank you so Yes, much. ma'am. Sure, ma'am. Sure. Good morning, everybody. My paper is on NEP 2020, a new approach to higher education in India. The National Education Policy 2020 marks a historic shift in India's educational landscape, introducing comprehensive reforms after more than 3 decades. The policy seeks to address long-standing challenges such as monotonous learning, rigid disciplinary boundaries, limited research output, low employability, and unequal access to quality education. And this research paper, it examines the vision, objectives, structural reforms, pedagogical innovation, and implementation mechanism of NEP 2020, with a particular focus on higher education. It also explores the key initiatives such as multidisciplinary education, competency-based learning, the academic bank of credits, multiple entry and exit system, digital integration, and research promotion through National Research Foundation. This paper also analyzes the benefits and challenges associated with the policy and argues that while NEP has the potential to transform India into a global knowledge hub, its success depends on effective implementation. Then the NEP 2020, approved by Government of India on July 29, 2020, represents the first major overhaul of education system. Since the previous education policy was started on 1986, and NEP 2020 aims to transform India into a vibrant knowledge society by reimagining
education at all levels. It also promotes flexibility, inclusivity, innovation, and lifelong learning while aligning Indian education with global standards. This research paper also analyzes framework for higher education, its core principles, structure, and digital and research initiative benefits and also challenges. One of the most significant pedagogical reforms proposed by NEP 2020 is the transition from memory-based education to competency-based education. The traditional education system prioritized content recall and high-stakes examination, limiting students' ability to apply knowledge in real-life situations. And this competency-based education focuses on measurable learning outcomes such as analytical thinking, communication skills, creativity, collaboration, and ethical reasoning. Assessment methods under NEP 2020 are designed to be continuous, formative, and diagnostic rather than purely summative. This shift encourages deeper understanding and lifelong learning while aligning education with the needs of industry and society. The multiple entry and exit system provide flexibility by allowing students to exit academic programs at different stages and re-enter later. Students receive a certificate after 1 year, a diploma after 2 years, a bachelor's degree after 3 or 4 years. This system reduces dropout rates and support learners facing economic, social, or personal challenges. Technology plays a central role in NEP 2020's vision of inclusive and accessible education. Digital platforms such as Swayam, Diksha, Virtual Labs, and National Digital Library of India expand access to high-quality learning resources. This policy also encourages collaboration between universities, research institutions, and industry to foster innovation and entrepreneurship. By strengthening research ecosystem, NEP 2020 seeks to position India as a global leader in knowledge creation. Another major benefit of NEP 2020 is skill-based education. The policy emphasizes vocational training, internship, experimental learning, and the integration of soft skills such as critical thinking, communication, and problem solving. The promotion of education in regional and mother languages is another important benefit of 2020. By encouraging instructions in local language, especially at the foundational and school levels, the policy aims to improve comprehension, cognitive development, and cultural rootedness. This approach not only makes learning more inclusive, but also help preserve India's linguistic diversity and while reducing dropouts also. Finally, NEP 2020 aspires to achieve global recognition of Indian degrees by improving academic standards, encouraging international collaboration, and allowing top foreign universities to operate in India. NEP 2020 offers several potential benefits: increased flexibility and student choice, improved employability, enhanced access to digital platforms, and promotion of educational regional languages, global recognition of Indian degrees. Then, lastly, we come to implementation across regions and state remains a critical concern since education is a concurrent subject in India. Variations in governance capacity, political priorities, and resources available can lead to disparities in the execution of NEP 2020 across different regions. To overcome Please these conclude, challenges, ma'am. Your time is up. okay, members, just a conclusion. The National Education Policy 2020 represents a bold and comprehensive attempt to reform India's education system in line with global and national needs. Thank you, ma'am. Thank you so much. Our next speaker, Dr. Sapna Pawar. Are you ready? Sapna ji, are you ready? Yes.
Can you start? Dr. Sapna Pawar is from Government Niranjan Kesarwani College, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh. She's professor of chemistry and putting her thoughts on skill development, employability, and industry linkages in chemistry. Her presentation number is 2. Please start. And please abide by 5 minutes. Good morning to all. मैं स्क्रीन शेयर कर Hello. I would like to request be ready by the time I introduce you. Hello. Hello. Please go ahead. एक मिनट स्क्रीन हेलो जी आपका स्क्रीन विजिबल है स्क्रीन विजिबल है जी विजिबल है प्लीज गो अहेड मेरा टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंडस्ट्री लिंकेज इन केमिस्ट्री मेरा ये टॉपिक जो है आज इस समस्या के लिए है कि आज शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है लोग खासकर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर डिग्री ले लेते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती है उनकी तो इसी टॉपिक पे मैं कुछ दे रही हूँ आज केमिस्ट्री आम एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि इंडस्ट्री ड्रिवन फील्ड बन चुका है जहाँ स्टूडेंट के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और इसके लिए स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनना पड़ेगा जैसे कॉम्बाइंड थ्योरी विद प्रैक्टिस उन्हें थ्योरी के साथ साथ एप्लीकेबल पार्ट पे भी अप्रोच करना होगा जो करिकुलम है वह जॉब मार्केटिंग के अनुरूप है या नहीं निश्चित करना होगा और रिसर्च और न्यू आइडियाज को इनकरेज करना होगा इन सब को फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट को केमिस्ट्री के फील्ड में स्किल्ड करना आवश्यक है टेक्निकल और लैब क्षमता के लिए क्या जरूरी है तो पहले उसको लैब के लिए स्किल होना चाहिए तो लेबोरेटरी स्किल के लिए उसको टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन ऐसे सब जो बेसिक प्रोसेस है केमिस्ट्री लैब के उनमें उसको स्किल्ड होना जरूरी है इसके अलावा उसको इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग भी आना चाहिए जैसे पीएच मीटर विजिबल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बेसिक आइडियाज ऑफ एचपीएलसी गैस क्रोमेटोग्राफी आदि इसके अलावा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के अंतर्गत उसको मॉलिक्यूलर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में भी महारत हासिल होनी चाहिए एक केमिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट को डाटा हैंडलिंग और एनालिसिस के लिए कंप्यूटर में पाइथन या आर जानना अच्छा होगा इसी तरह अपनी फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल भी आवश्यक है और इन सबसे ज्यादा जरूरी है द्वारा अपने को अपडेटेड रखना इसके लिए निर्धारित टेक्स्ट बुक के अलावा उसको नॉलेजेबल बुक्स रीडिंग करनी होंगी और उनके साइंटिफिक आर्टिकल्स को पढ़कर अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा जैसे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी रॉयल सोसाइटी केमिस्ट्री इन सबसे जुड़ना उसके लिए उपयोगी अब लर्निंग पहले सभी जो बेसिक आइडियाज हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है इनकी बार बार प्रैक्टिस करके उसमें उनको परफेक्शन लाना होगा और इससे उसको जो एक्सपीरियंस जो आइडियाज उसने सीखे हैं उसकी प्रैक्टिस की है करने का एक्सपीरियंस उसको लेना है इंटर्नशिप के जरिए आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं कैरियर इन केमिस्ट्री एकेडमिक फील्ड में टीचिंग जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में वो टीचर बन सकता है रिसर्च के फील्ड में अगर जाए तो फूड साइंटिस्ट फूड सेफ्टी प्रिजर्वेशन और न्यूट्रिशन की स्टडी और उस पर रिसर्च करते हैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट ये क्रिमिनल और लीगल
इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरक्राफ्ट और मैन्युफैक्चरिंग के मटेरियल बनाते हैं, हेल्थ साइंटिस्ट या हेल्थ केयर को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं, और मिलिट्री रिसर्च इनकी डीआरडीओ जैसी जगह पे पोस्टिंग होती है और मिलिट्री संबंधित केमिकल रिसर्च करते हैं। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। किसी केमिस्ट्री पर्सन को एम्प्लॉयबिलिटी के अवसर के लिए इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। यदि डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री इंगेज हो तो स्टूडेंट को निम्न बेनिफिट्स होंगे। जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल अप्रोच प्राप्त होगा, जैसे किसी केमिकल का रियल प्रोडक्ट किस तरह यूज होता है, जैसे दवा में, प्लास्टिक में, फर्टिलाइजर में, पेंट और फ्यूल्स में। दूसरा है उस नॉलेज का ज्यादा वास्ट एरिया में एप्लीकेशन सीखेगा, जैसे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी, इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक को सीखने में सहायता प्राप्त होगी। इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से डिपार्टमेंट अपने करिकुलम को इंडस्ट्री ओरिएंटेड डिजाइन करेगा। इसके अलावा उसके अगर वो इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करेगा तो इंटर्न्स के करेगा। Time is up, ma'am. Please continue. ये कुछ शासन की योजनाएं हैं, ये स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, और गवर्नमेंट ने खुद इस दिशा में पहल की है। ये सब योजनाएं हैं और इनके ये पार्टनरशिप है, और इसकी ये जो मतलब इसके लक्ष्य ये है, ये सब योजनाएं गवर्नमेंट की हैं जिससे हम इंडस्ट्री और एकेडमिक जो कोलैबोरेशन है उसको इनहेंस कर सकते हैं। थैंक यू। Please continue. Thank you so much, Dr. Sapna ji. You have focused on skill development of chemistry students, और आप खुद उस पे काम कर रही हैं. That's so good. Thank you so much. I would like to call upon Dr. Ragini Chauhan, if she present. Dr. Archana Kuraria ji. Yes, ma'am. Dr. Archana Kuraria ji. Yes, Are you ready? Yes, ma'am. I am ready. By the time I am introducing you, please start sharing your screen. Dr. Archana Kuraria ji, she is guest faculty of computer science from APN College, Sadar, Jabalpur. She is presenting her thoughts on smart classroom to smart campuses, integrating AI and digital platforms in modern education system. Archana Kuraria, she is serial number 4. Archana ji, you can start, please. Good morning, ma'am. My topic is Smart Classroom to Smart Campus, Integrated AI and the Digital Platform in Modern Education. The transformation of traditional education environment into a smart ecosystem represent one of the most significant shifts in the compulsory learning pedagogy. With rapid advantages in artificial intelligence, Internet of Things, cloud computing, and the digital platform, education institutions worldwide are adopting smart technologies to enhance teaching, learning, administration, and campus life. This research paper analyzed the innovation of the smart classroom into fully integrated smart campus, analyzing the role of AI and the digital platform in receptioning education, and explore the technology implementation strategy, pedagogy, implementation benefits, challenges, and future directions. The findings of highlight how the integration of AI and the digital platform enable personalities, learning improvement, administrative efficiencies, and student acknowledgement, data-driven decision making, and inclusive educational opportunities. The paper includes with recommendation for the learning statement, ethics, and educational smart campus ecosystem. Education is undergoing a profile the digital transformation. Technical classroom characterized by the static instruction method, physical chalkboard, and one-side face. All curriculum are binding, recognize, analyze, dynamic, interconnected learning environment ways. The leverage is analyzing technologies. The shift from the technical teaching smart education is not just about the disclose new tools. It involves the resizing
instruction, design, campus, operation, and education government. At the core of this transformation are smart classroom and smart campus. A smart classroom integrates digital connected devices and AI software to deliver interconnecting and adapting the learning experiences. In construct a smart campus in college, the entire education institution integrated technologies of the academic, administrative, and this paper investigate how the AI and the digital platform serves as catalyst for this evaluation. Thank you, ma'am. Thank you so much. Archana ji, yours right back. Now I would like to call upon Janvi Devati. Janvi Devati. Dr. Nidhi Malviya. Srimati Anuradha Gandhi. Dr. Seema Pathak. Ashwini Nagri. Mr. Pushpendra Pathak. Yes, madam. Good morning. Are you ready to present your paper? Would you like to share your screen? Pushpendra Pathak ji, are you ready? भैया मैं 2 मिनट प्रेजेंट कर लूँ, उसके बाद मैं तुरंत देता हूँ। जी मैडम, सभी महाविद्यालय परिवार को सबसे पहले ऐसा शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिवार को सबसे पहले ऐसे आयोजन करने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं छात्र हूँ, मुझे इस विषय में अपने जो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मुझे रखने के लिए समय मिला है, जो कि टॉपिक मैंने दिया था द चेंजिंग रोल ऑफ टीचर अंडर एनईपी। इसके कुछ की पॉइंट्स है जिसके बारे में शॉर्ट में अपना विषय रखूंगा। पहले इंट्रोडक्शन, की चैलेंजेस रोल ऑफ टीचर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एनईपी 2020 और कंक्लूजन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जैसे सब हम लोग देखते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में हम सभी के सामने, राष्ट्र के सामने एक प्रमुख विषय बनकर के आया है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 represents a transformative reform in the Indian education system aiming to align education with the demands of the 21st century. At the core of this policy lies the recognition that teachers are the key agents of educational changes. NEP 2020 redefines the traditional role of the teachers and envisions them not merely as transmitters of knowledge, but as facilitators, mentors, and innovators in the teaching learning process. इसके key changes role of teachers, importance facts, first है instructor to facilitator, second है learner centric approaches, third है mentor and counselor, and integrators of technology, interdisciplinary educators, values and ethics builders, continuous learners, academic autonomy and accountability. In conclusion, NEP 2020 places teachers at the heart of educational transformation in India. The policy shifts their role from traditional and instructor to facilitators, mentors, innovators, and lifelong learner by promoting experiential learning, competency-based assessment, technology integration, and holistic development. Teachers are empowered to nurture creative, critical, and responsible citizens. Thus, the success of NEP 2020 largely depends on empowered, well-trained, and motivated teachers who can lead the nation toward quality and inclusive education in the 21st century. ऐसे विषय पर हम सबको बहुत अच्छे से और बच्चों तक पहुंचाने के लिए हम सबको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे राष्ट्र के अंदर समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे और इसका सबको लाभ मिले। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे संक्षेप में विषय रखने के लिए मिला। मैं एक मीटिंग में हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी का
introduction नहीं बताना था. Mr. Pushpin Pathak ji is faculty in Vijayashri Educational Institute, Jabalpur, and he presented his thought on the changing role of teachers under NEP 2020. Thank you Now so much, next, madam. thank you. Now next talk is from Dr. Rakesh Rathore. Dr. Rakesh Rathore from School of Business Studies, PAU, Ludhiana. Dr. Ravindra Singh, Dev Sanskriti Vishwavidyalay, Haridwar. Dr. Rachna Pandey, Home Science College, Jabalpur. Dr. Richa Gumasta, Government Arts College, Panagarh, Jabalpur. Dr. Richa. Dr. Pankaj Kumar Sahu, Home Science College, Jabalpur. Please confirm your presence. Dr. Richa Gumasta. Yes, ma'am. Are you present? Yes. Dr. Richa Gumasta ji is from Government Arts College, Panagarh, Jabalpur. She is Associate Professor Botany and putting up her thoughts on role of research and innovation in revitalizing Indian knowledge systems for sustainable development. Her serial number is 14. Please start. Okay. Richa ji, you can start with it. Yes, ma'am. Good morning, everyone. I am Dr. Richa Gumasta, Assistant Professor, Government College, Panagarh. Today, I will be presenting on the role of research and innovation in revitalizing Indian knowledge system for sustainable development. मैम मेरी स्लाइड शो हो रहा है मैम? Yes, it's visible. You can start. Okay. Okay, ma'am. You have to conclude within 5 minutes, please. From the first slide, ma'am, or this? Okay. Now the learning objectives. In this presentation, we will understand the foundations of Indian knowledge system, explore their relevance to sustainability, examine modern scientific validation tools, analyze innovation models, and discuss policy support and interdisciplinary approaches aligned with the SDGs. Indian knowledge system are rooted in concept like Rata mentioned in Rig Veda, which represents universal balance of ecological harmony, Dharma, which also represents moral responsibility towards society and environment, Prakriti, which highlights the interconnections of human and nature. These principles form the philosophical backbone of sustainable living in Indian tradition. India has long practiced sustainable approaches such as mixed cropping for soil health, sacred groves for biodiversity conservation, rainwater harvesting for water security, and Ayurveda for preventive health care.
These practices demonstrate that sustainability was embedded in traditional lifestyles. Modern research tools like GCMS helps scientifically validate traditional knowledge of medicinal plants mentioned in scriptures through phytochemical profiling for the identification of bioactive compounds such as alkaloid, flavonoids, terpenoids, and phenolics. Their compound identification for structural characterization of volatile and semi-volatile constituents, chemotaxonomy, drug discovery, and validation of classical medicinal plants. We bridge traditional wisdom with the modern analytical science. Now, molecular docking, bioinformatics approaches for integrating traditional knowledge with the modern science. We include molecular docking that allows to predict interactions between phytochemical compounds and protein targets. In silico drug discovery further accelerates identification of potential therapeutic compounds using computational and bioinformatic tools. These integrations significantly reduce time and cost in drug discovery while scientifically supporting traditional medicinal plants. Now, innovation through AI, GIS, and data science, emerging technologies strengthens Indian knowledge system research. AI helps to analyze traditional texts. Predictive modeling supports data deriving forecasting. GIS mapping assist in plant conservation. Data monitoring tracks ecosystem for sustainable resource management. Integration innovation for merging technology with traditional knowledge system. Together, these approaches create integrated innovation systems. Now, IKS and Sustainable Development Goal, Indian knowledge system contribute directly to SDGs like SDG 3 through preventive healthcare like Ayurveda, SDG 4 by integrating traditional knowledge into education, SDG 12 by promoting community-based sustainable consumption and production. Thus, IKS supports global sustainability agendas. Richa ji, you need to conclude, please. Okay, ma'am. In conclusion, research and innovation act as a bridge between ancient wisdom and modern science by integrating IKS with advanced technology and ethical framework. We can create sustainable, inclusive, and globally relevant development models. Thank you for your attention. Thank you, ma'am. Thank you, Richa ji. You have put forth the revitalizing IKS system for sustainable development. Thank you. Now we are proceeding ahead with Dr. Pankaj Kumar Sahu, Dr. Punita Upadhyay from St. Aloysius College, Govt, Jabalpur, Dr. Manjulata Sahu from Good morning, Home Science madam. I am College, Dr. Punita Jabalpur. Upadhyay. Dr. Punita Upadhyay, she is Yes, Assistant madam. Professor from St. Aloysius Institute of Technology, Govt, Jabalpur. She is putting her thoughts on role of NEP 2020 in promoting value-based education in India. Her serial number is 16. I hope I am audible. Yes, ma'am, you are audible. And please Thank you so much, ma'am. unmute within 5 Respected, minutes. thank you so much, ma'am. Respected chair, honorable judges, and panel members. Good morning to one and all. Today, my topic is role of NEP 2020 in promoting value-based education in India. We know that education in India has traditionally been viewed not merely as a means of acquiring knowledge,
or skills, but as a holistic process aimed at development of character, values, and social responsibilities. And this is what I am trying to discuss today. And in the abstract, I've talked about the paper talks about education in India, which emphasizes holistic development, growing focus on material success, which has weakened ethical values. NEP 2020's aim to revive value-based education, how it integrates ethics, culture, life skills, and constitutional ideals, and focus on moral, social, and spiritual development. The keywords here are NEP 2020, value-based education, Indian philosophy, holistic education, and ethical values. We know education shapes intellectual, moral, and social development. Ancient Gurukul system focused on character and discipline. Modern education has somehow become exam and market-oriented. Social issues highlight need for value-based education, and NEP 2020 redefines education as holistic human development. Aim of the study was to analyze the role of NEP 2020 in promoting value-based education and to link NEP 2020 with Indian educational philosophies and to study ethical, moral, and holistic aspects of education. Concept of value-based education. Value-based education focuses on moral, ethical, and social spiritual values and develops responsible and compassionate individuals. It encourages distinction between right and wrong and aims at positive contribution to the society. Here, the presenter has tried to take valuable insights from from Sri Satya Sai Baba's educational policies, Sri Aurobindo's and Swami Vivekananda's insights on value-based education. Sri Satya Sai Baba says, education brings out inherent human values, emphasizing 5 human values, which are Satya, Dharma, Shanti, Prem, and Ahimsa. And education without values is incomplete. Character building is actually the true purpose of education, he says. Swami Vivekananda says that education is the manifestation of perfection already in man. And he focuses on character building, fearlessness, self-confidence, service to humanity, and education as a tool for national regeneration. Sri Aurobindo works on integral education and says that education should develop physical, mental, emotional, psychic, spiritual aspects and emphasizes on inner discovery. He aligns this with holistic and multidisciplinary learning. Overview of national education policy. It is introduced after 34 long years, as earlier speakers have already told about this. Aims at 21st century education rooted in Indian values with key features: holistic development, ethical and constitutional values, creativity, critical thinking, learner-centered education. Vision of education is development of good human beings, encouraging rational thinking, compassion, promoting social responsibility, balance knowledge, skill, and values. This balance is a very important factor. Holistic development is important, which focuses on intellectual, emotional, ethical, and physical growth, which moves beyond rote learning and encourages balanced personality development, resonates with our old Indian philosophical thought. Integration of ethical and constitutional values, justice, liberty, equality, and fraternity is given importance. Secularism and respect for diversity supports social harmony and national unity, which is very, very important for everyone. Curricular reforms, inclusion of Indian philosophy, ethics, yoga and mindfulness, cultural heritage, and builds identity and moral responsibility. It strengthens value orientation. Experimental and value-oriented pedagogy, project-based learning, community engagement, service learning, encourages empathy, cooperation, and social responsibility. Role of teachers in value education. Teachers are considered role models, and it emphasizes on ethical and professional conduct of teachers. Teacher education includes values, ethics, reflective practices, and teachers values they teach. Challenges: inadequate teacher
curriculum, limited awareness, regional and institutional disparities. Suggestions are regular teachers Thank you, training Dr. program, Punita ji. quality, community and parental involvement, and promotion of service learning. Dr. Punita Finally, I Upadhyay ji, conclude. we need Yes, to ma'am. mute you, please. You have really raised important aspect of education. Thank you so much. Now we are proceeding ahead. I would like Thank to you, repeat ma'am. the Thank you so names. much. If anybody is present, please let me know. Dr. Ragini Chauhan from Narsinghpur, Janvi Dwivedi from OSK Government College, Khamaria, Dr. Nidhi Malviya from Government College, Rinki, Anuradha Pandey, PG College, Mandla. Is anybody present? Please let me know. Dr. Seema Pathak, St. Aloysius, Govt, Jabalpur, Ashwini Nagar, St. Aloysius, Govt, Jabalpur, Dr. Rakesh Rathore, PAU, Ludhiana, Dr. Ravindra Singh, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar, Dr. Rachna Pandey, Home Science College, Jabalpur. Yes, please. मैं डॉक्टर निधि मालविया. Dr. Nidhi Malviya ji, are you ready to present your paper? Yes, ma'am. Dr. Nidhi Malviya ji, she is faculty in Government College, Rahati, and she is presenting her thoughts on education that builds knowledge, skill, and values together. Her presentation serial number is in 6. Please go ahead and please abide by 5 minutes. Good morning, ma'am. Good morning. Today I am Nidhi ji, presenting please, आपका presentation time 5 minutes है. knowledge, skill, and values together. A holistic approach to learning. Education shapes individual and society. Through education, integrated knowledge, skill, and values. Holistic learning prepares students for life and work. Education teaches value like honesty, respect, responsibility, and empathy. Education encourages innovations and progress in society. Education teaches value like honesty, respect, responsibilities, and empathy. It's play a key role in nations building and development. Communications and teamwork, critical and analytical thinking, creativity, innovations, and digital technology skills. So problem solving and decision making, development of skill through education. Education empowers life of every student. Education is the most powerful tool that inform potential into progress. Today, learning shapes tomorrow's success. Meaning of knowledge, understanding of facts, concepts, and theories. Knowledge and understanding of fact, concept, information. It is gained through education, experience, observation, and study. Knowledge helps us understanding the world around us. Knowledge support problem solving and innovations. Knowledge light the path to success. Meaning of skill, ability to apply knowledge in real life situation, includes communication, critical thinking, creativity, help in problem solving, and decision making. Skill based education more powerful into the nation for the betterment of youth. Skill are the bridge between learning and success. Meaning of values, moral principle guiding human behavior, example honesty, respect, empathy, responsibilities, essential for
character development. Values are moral principle that guides our behavior and decisions. They are developed through family, education, culture, and experience. These slides shows in this knowledge and skill values. Why integrated is important. Knowledge without skill is incomplete. A skill without value may lack directions. Balanced development create responsibility citizens. Education has a well organized structure, mainly including stages like primary, secondary, higher secondary with different curriculum for each stage. Education build knowledge through subject like science, mathematics, languages, and social study. Education promotes social awareness and citizenship. These are slides showing this role of teachers, facilitate understanding and practical learning, encourage ethics, behavior, and social awareness, creating inclusive and supporting classrooms. Role of curriculum, integrated theory with practical activities, promotes project-based and experimental learning, the teacher strategies, group decisions, and collaboration learning, case study, and real life of examples. Benefits of our students improve academic performance, strong interpersonal and leadership skill, development of each ethics and social responsibilities, long-term impact, build confidence and compact individuals, strengthen society through responsibility citizens. These are conclusion. Education must be go beyond textbooks. Integration of knowledge, skill, and values is essentials. Holistic education prepare students for life. Thank you so much. Yeah, these are the things. Thank you, Dr. Nidhi Nalveji. You have raised the things which still need to be filled up. Thank you so much. Thank you, ma'am. And repeating the names once again, please confirm if you are present. Dr. Manjulata Sahu from Government Science, Home Science College, Jabalpur. Dr. Manjulata Sahu. Dr. Pankaj Kumar Sahu. Dr. Rachna Pandey, Home Science College, Jabalpur. Dr. Ravindra Singh, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar. Dr. Rakesh Rathore, EAU, Ludhiana. Ashwin Nagar, St. Aloysius, Gaur, Jabalpur. Dr. Seema Pathak, St. Aloysius, Gaur, Jabalpur. Anuradha Pandey, PG College, Mandla. Janvi Divedi, OFK College, Khamaria. Dr. Ragini Chauhan, Narsinghpur. So we are proceeding ahead. Anushka Mishra from St. Aloysius College, Southern Jabalpur. Yes, ma'am. Anushka Mishra ji, she is present from St. Aloysius College, Southern Jabalpur. She is presenting her thoughts on sustainability in campus by incorporating green education practices, making it a resilient ecosystem. Her serial number is 1919. Anushka ji, please go ahead and please abide by 5 minutes. You can start now. Yes, ma'am.
Good morning, respected faculty members. My name is Anushka Mishra, and I will be giving the presentation on sustainability in campus by incorporating green education practices, making it a resilient ecosystem. Now, as we all know that our Mother Earth is at high risk because from the past few centuries, the humans are polluting the earth, and because of which it was realized by us only in the 17th century that the effect of air pollution has started negatively affecting the human health, and there is a need of sustainable development as we have to preserve the resources for the upcoming generation, as the government is also focusing on SDGs. So it means enhanced quality of life for us, and conservation and augmentation of our precious natural resources will only be meant when each one of us will be conserving the resources as well as protecting the Mother Earth. So the objectives of my study is to highlight the need of green practices in higher education institutes. Next, to list the green practices. Next, what will be the impact of green practices on our environment, and what are the suggestions that we can incorporate to make our campus more green and sustainable. So we have studied many research papers, and the literature of review. After reviewing the literature and research papers, we have found that there are two research problems. That is, what strategies in the learning instrument dimension are implemented by higher education institutes to achieve a sustainable campus? And next, what strategies in the campus physical facilities are implemented by higher education institute to achieve sustainable campus? So our methodology says that I have surveyed the different departments in our college, and I have listed some of the green practices that our college is practicing in the campus. So the first practice is many departments like chemistry, botany, and microbiology and physics department is designing practicals in such a way that green synthesis are focused, mainly by substituting one chemical with the least toxic chemical. Then next, we have started taking the assignments not in plastic but in the paper files, that is practiced by many departments. Next, I have developed organic pH strip that was made by bougainvillea flowers of some of the Bachelors of Science students. Next, we generally do practice this thing that whenever the students are not sitting, please turn off the lights. That can be a little contribution that many people forget about it. Then next, reusing the crafts, file covers, dustbins, and solar panels are also in the college terrace. That is utilizing the natural sunlight. Then mushroom cultivation, vermicomposting, all these are made in the laboratory and they are sold in the college campus only. Then I have also made organic body mist from the orange peel and champa flower. Hydroponics, that is also known as soilless cultivation at terrace, is also practiced in the campus. Then we have also made organic lip gloss from the bougainvillea different color flowers that gives us a gloss and a color also. And then the water that is leaked from the sink is collected in a tank, and that is treated first and then it is discharged. And then college is also working on a paperless work as a sustainable practice. Now the result and discussions as we move ahead. First is designing a practical in such a way that green synthesis will be focused. So the example here we take is green synthesis of aspirin by taking acetic acid, not acetic anhydride, because it is toxic. Then assignments are taken in paper files, not the plastic files. The third is organic pH strip, that is giving us a good result for acids and bases because the bougainvillea flowers are rich in anthocyanin. Then turning off the light when students are not sitting. Reusing the file covers, solar panel, dustbins are regularly cleaned and again they are used. If we have paper printed on one side but the next side is blank, then we utilize also for printing purposes in a regular college work. That is a departmental work, not official. Then also mushroom cultivation, then we cut the mushroom and sell it in the market also and in the
departments and college campus also. Organic body mist, hydroponics, lip glosses, and colleges also working for paperless work. Now, some of the suggested green practices that we can practice is, yes, ma'am. Some green practices which can be or incorporated is like kitchen gardening, bonsai making, best out of waste, paperless work, and a student can be honored in an annual function for green practices. So, at last but not the least, there is a lot has to be done because protecting our environment is not a simple game, but it is a complex issue which can be resolved by incorporating small green practices in a letter and spirit to achieve sustainable development. Thank you, everyone. Thank you, Anushka ji. You have really raised important aspects of the ecosystem. Now we are taking up Ankit Kumar Tiwari ji, St. Aloysius Institute for Jabalpur. Dr. Mohammad Rashid Khan, Department of Chemistry, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur. Dr. Khan, are you present? Proceeding ahead, Dr. Shivani Nishasha, Dr. Shivangi Mishra, Home Science College, Jabalpur. Sangpriya Tiwari, Mahakaushal College, Jabalpur. We are moving ahead. Dr. Rachna Thakur, Government Science College, Jabalpur. Dr. Rachna Thakur, Dr. Vibha Chaudhary, Government Science College, Jabalpur. Yes, ma'am. Dr. Vibha Chaudhary, she is Assistant Professor of Physics from Government Science College, Jabalpur. She is presenting her thoughts on AI and higher education, transparency, and accountability under NEP 2020. You can start your presentation now. Thank you, ma'am. My screen is visible, ma'am? Yes, it's visible. Thank you. Good morning, Please keep everyone. it to 5 minutes. Today I am 5 going minutes. to present my paper titled AI in Higher Education, Transparency and Responsibility under NEP 2020. This work discusses how artificial intelligence is being used in higher education in India and why transparency and ethical responsibility are very important while using AI, especially under the framework of NEP 2020. Artificial intelligence is rapidly changing higher education. It is used for automated assessment, learning analytics, virtual support system, data-driven decision making. Actually, NEP 2020 encourages digital and blended learning in India. However, the use of AI also raises some serious concern related to transparency, data privacy, and academic integrity. This paper reviews existing literature and policy-related documents to understand these challenges and suggested responsible ways to use AI in higher education. Today, universities are quickly adopting digital technologies. AI is being used in many areas such as chatbots for students' queries, plagiarism checking, automated grading, and predicting student performance. These tools help institutions manage large and diverse student population more efficiently. However, rapid adoption also creates new challenges that need careful attentions. NEP 2020 strongly supports the use of technology in education. It promotes online learning, blended learning, and digital tools to improve quality and access to education. AI helps to identify learning gaps,
personal learning, and supporting data-driven decision-making. Therefore, AI plays an important role in achieving the goals of NEP 2020. In this slide, despite its benefits, AI also raises some serious concern. Many AI system work like black box, which means we do not understand that how the decision our AI make. There are some risk of algorithmic bias, lack of transparency, data privacy issues, and misuse of student data. This issue can affect trust, fairness, and academic integrity in higher education. In this slide, I present previous studies show that AI can be very helpful in education. Research by Simons and Bakers shows that the learning analytics can identify students who are at risk early and provide earlier supports. Other studies shows that the AI-based personalized learning improves student engagement and learning outcomes, especially in blended learning environment. At the same time, some other researchers raises some other ethical concerns about the use of AI, from which Floridi and others emphasize that the AI system must be transparent and accountable. They argue that the excessive use of AI can harm critical thinking and traditional assessment methods. Other warn that the large-scale collection of student data can lead to misuse if proper safeguards are not in place. In this papers, I use a descriptive qualitative research methodology for which the sources are NEP 2020 documents, peer-reviewed research articles, and institutional reports. The materials were analyzed under 4 subcategories, that is ethics, transparency, accountability, and governance. The findings are conceptual and policy-oriented rather than statisticals. This analysis basically decision के discussion इस पे करें तो the analysis shows that the AI has a strong potential in higher education. It can personalize learning paths, improve student engagement, and help institution identifying at-risk student early. AI can also improve administrative efficiency and support better academic decision making. However, there are some serious risks also for use of AI in higher education. Biased algorithm and lack of transparency can increase inequity and reduce trust among students. Although NEP 2020 provides ethical principle, but it does not give any clear and practical guidelines for AI governance. So this creates a gap between policy and actual implementation. Based on this study, I suggest some recommendation. So institutes should develop their own AI governance framework. AI systems should be explainable, data practices should be responsible, and human supervision must always be present when you present some AI uses. These steps will help ensure ethical and transparent use of AI in education. Please conclude, ma'am. In conclusion, AI has great potential to improve digital and blended learning in higher education. It can enhance personalization, student engagement, and institutional effectiveness. However, these benefits can only be achieved when AI adoption is guided by strong governance, ethical responsibility, and transparency. AI should support education in a human-centered way, aligned with the vision of NEP 2020. There are some key references which I used in studies. Simons and Bakers, Floridi et al., Holmes, Sevan, and Wisdom. That's all. Thank you. Thank you, madam. Thank you, ma'am. With this talk, we are proceeding ahead.
I would like to call upon Dr. Rachna Sacha, Yes, madam, I am present. Faculty of Government Science College, Jabalpur. आवाज She's putting up her thought on towards a green campus. मैम आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आवाज आ जी, रही है? आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है आपसे? जी स्लाइड शेयर हो रही है मैडम? आ जाओ बच्चों। मैडम स्लाइड शेयर हो रही है? नहीं है। एक मिनट मैम, स्लाइड शेयर नहीं हो पा रही है। स्क्रीन एक शेयर मिनट कर मैम, लीजिए। एक मिनट। जी जी एक मिनट मैडम, स्लाइड शेयर नहीं हो पा रही है। 2 मिनट मैम। टेक योर टाइम। या आई एम टेकिंग अप नेक्स्ट लिस्ट। आप आगे जितने लोग हैं प्लीज बी रेडी। डॉक्टर रूपाली जैन, डॉक्टर दौलत राम ग्वालवंशी, डॉक्टर Yes, ma'am. सुजाता Good कुमार, morning, ma'am. डॉक्टर प्रीति बाला डोंगे, डॉक्टर कविता चहल, डॉक्टर एम के भारद्वाज, अजय कुमार रजक। आप सभी तैयार रहिए। डॉक्टर रश्मि साचा के बाद डॉक्टर रूपाली जैन आपका प्रेजेंटेशन। डॉक्टर रश्मि, Yes, ma'am. आर यू रेडी? आप ओरल प्रेजेंटेशन दे दीजिए मैडम। मैं ओरल प्रेजेंटेशन दे दूं क्या मैडम? यस प्लीज। अच्छा एंड ठीक प्लीज है। प्लीज अबाइड बाय द टाइम ऑफ 5 मिनट्स। ओके ओके मैडम। आवाज सुनाई दे रही है? यस, क्लियर। ठीक है। Today I present design of my college as a green campus. The concept is focusing on green graduates. Who is green graduates? Green graduates are who understand environmental issue like climate change, pollution, saving water, promote sustainability in their future careers. My paper aims to review the Green Campus initiative take all over the world and based on linkage between campus greenery and climate change mitigation. This study suggests the how to improve our campus greenery and cleanness. It enhances the beauty of campus and improve the health and well-being of students, staff, and visitor. What is green campus? Green campus, known as referred to as a grounds, building, college, university, school, encompassing library, academic halls. But the term also extend to corporate or religious organization with similar sprawling facility, especially the entire domain of an institution for learning, work, or worship. Its significance a physical space where a community lives, studies, work, and interact. What is the importance of green chemistry? Our college is a green campus. All of you know that the our college has a extraordinary and remarkable example of environmental conservation for many years. There are some components: the solar roofs, rainwater harvesting pits, botanical garden, Amrit Vatika of our college, greenery in boys hostel and girls hostel, sports complex with indoor stadium, extensive and more natural informal ground, and a canteen with huge natural grass and library that embodies Indian traditions and surrounded by lush greenery and agriculture faunings. There are so many beauty in our college. What is the importance of green campus? There are environmental impact. A green campus is just not having nice lawns and few recycling bins, but is creating a living laboratory where sustainability is woven into the DNA of institution. The practice what you preach, model for the next generation. The benefits of some green campus are environmental impact that trees and plants improve air qualities and releasing oxygen. Green space reduce noise pollution or natural provide a natural habitat for birds and insect. Health and well-being, fresh air and greenery reduce stress and improve mental health. Rainwater harvesting and zero spacing protect
local water table. Educational impact, a green campus serve as a living laboratory for the students and encourage environmental responsible behavior among student and staff. Health and well-being, there is a green space, give the mental clarity, reduce stress, access to nature on campus, lower cortisol level, and help student recharge between the exam. Community influence, when campus goes green, it set a standard for the surrounding city, town of the follow. Some measures which is known the environmental green. First, we organize a green drive. All NSS and NCC students can organize plantation drive promoting various environmental conservation programs initiated by the government of India, can plan activity along with the students and staff. On the occasion of birthdays, tree plantation can also be carried out to the to help protect the conserve the environment. Use energy efficient lights and fans. Turn off electrical device when it is not used. Collect rainwater and use in gardening. Go digital. Avoid use and throw the bottle. Plastic bottle cannot be used. Recycle, reuse, reduce, and stop using disposable items. Conduct workshop. Some create awareness, like conduct workshop seminars on eco-friendliness, put up posters and sign about keeping campus clean, encourage students to follow a sustainable lifestyle, clean the classroom, do not use any tobacco and gutka in the campus. And there are so many other, yes, if, some are waste management, electricity, energy efficiency, biodiversity of water. And some new ideas are energy and technology piezoelectric walkway. Install special floor tiles in high traffic areas, which is convert kinetic energy from footsteps into electrical energy. Smart glass windows, which is used. Ji. Uh, some glass and automatically uh, tints based on sun intensity, and solar tree are used. Solar tree charging hub instead of standard benches, like sculpture trees, and solar reef panels are which is provide shade also, and a wireless charging ports for students laptop and phones. There is some conclusion. Keeping the campus green is not only the responsibility of employees, students, of teacher alone. Rather, it is duty of every individual to think about what they can personally do make the campus more beautiful and environment friendly. Thank you so much. Thank you, Madhu. So with this Ma'am, talk, we are moving ahead with Dr. Rupali Jain. She is Ma'am, I'm faculty of Ritika Government Thakur. Science College, Yes, ma'am. Jabalpur, from Department of Biotechnology, putting up her thoughts on integrating Indian knowledge systems in higher education, foundational perspective and applications in biotechnology. Dr. Rupali Jain. Yes, ma'am. Please start. Good morning. Please keep hold of 5 minutes. Yes, ma'am. Ma'am, मेरे slides show हो रहा है? Yes. Hello. You are audible. Yes, slides ma'am. visible. Yes, Please ma'am. go ahead. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. A very good morning to respected dignitaries and my dear friends. I, Dr. Rupali Jain, presenting Integrating Indian Knowledge System in Higher Education, Foundation Perspective and Application in Biotechnology. आज मैं आप हायर एजुकेशन में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और इनोवेटिव प्रैक्टिस पर बात करूंगी, जो कि एनईपी 2020 के कॉन्टेस्ट में है. एनईपी 2020 फोकस्ड है इंडियन नॉलेज सिस्टम को एजुकेशन में इंक्लूड करना. इसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न नॉलेज को इंटीग्रेट किया जाता है. बायोटेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जहां ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है. आईकेएस का मेन है हमारा पुरखों की नॉलेज को ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जैसे आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड बायोडाइवर्सिटी. इसका मेन उद्देश्य है नेचर के साथ बैलेंस, सस्टेनेबिलिटी और एथिकल थिंकिंग पर ये बेस्ड होता है. आज के समय में एजुकेशन, इनोवेशन,
बहुत जरूरी है जिससे क्वालिटी इम्प्रूव हो और स्टूडेंट्स में इनकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके। इनोवेशन प्रैक्टिस जैसे केस स्टडी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और डिजिटल टूल्स स्टूडेंट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग्स देते हैं और उनके बेहतर भविष्य के लिए इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग एंड केस स्टडी मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड को यूज किया जाता है। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी में आईकेएस का यूज आयुर्वेदा से ड्रग डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइजर और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में यूज होता है। इस इंटीग्रेशन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एथिकल रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे साइंटिफिक प्रूफ की कमी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का ना होना। मैं अपने टॉपिक को कंक्लूड करूंगी। आईकेएस और इनोवेटिव प्रैक्टिस मिलाकर हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और एनईपी 2020 के गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। थैंक यू मैम। Hello, ma'am. Rupa Vijay. Now we are proceeding ahead. Dr. Daulat Ram Gwalvanshi from Government Science यस मैम, College, मैं Jabalpur. अवेलेबल हूँ मैं। Yes, please. हेलो मैम, आवाज आ रही है? जी, Dr. Daulat Ram Gwalvanshi ji. जस्ट मिनट He is मैम, Assistant Professor from Government शेयर Science College, शेयर Jabalpur. कर रहा हूँ जी। He is presenting on exploring the indigenous knowledge system of plants, a case study of ethnic tribes of Balaghat, Madhya Pradesh. डिस्प्ले हो रहा है मैम, पीपीटी Yes, डिस्प्ले हो रहा है? it's visible. आप शुरू कर सकते हैं। 5 जी मिनट पे अपनी बात पुटअप मैं करिए जी प्लीज। जी जी मैं मेरा जो टॉपिक है वो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम पर है, जो बालाघाट जिले में निवासरत करने वाले गोंड और बैगा जनजाति पर है, जिनको मेडिसिनल प्लांट और प्लांट्स से संबंधित जो इंडिजिनस नॉलेज है या ट्रेडिशनल नॉलेज जो सिस्टम है उसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है। इसी से रिलेटेड मेरा जो छोटा सा जो है रिसर्च है, जिसमें मेडिसिनल प्लांट पर मैं यहाँ पर जो है रिसर्च प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें लगभग जो है 33 प्लांट स्पीसीज हैं जिनका जो है मेडिसिनली इम्पोर्टेंस जो है गोंड और बैगा टाइप के द्वारा मुझे बतलाया गया। यह जो रिसर्च है वह मैं फील्ड एरिया पर जो है क्वेश्चनर बेस्ड और फील्ड सर्वे बेस्ड मैंने किया था, जिसमें उन्होंने मुझे विभिन्न जो प्लांट्स के जो नॉलेज है या उनका उपयोग है एज मेडिसिनल प्लांट, एज फूड, एज डिफरेंट पार्ट्स के रूप में किया गया, उनके बारे में उन्होंने बताया। जिसमें कुछ जो प्लांट्स जो हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आर्जुमन मैक्सिकाना, इसको पिलीकटरी या सत्यानाशी कहते हैं, जिसका जूस जो है 6 से 8 जो बीज का जूस बनाकर अगर हम किसी को भी अगर कुत्ता काट लेता है अगर उसको पिलाते हैं तो वह जो है रिकवर हो जाता है, ऐसा उनका जो बिलीव है, मानना है, जिसके बारे में उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने बताया ग्लोरियस सुपरबा के बारे में। यह भी जो है प्लांट कलियारी का प्लांट है, बहुत सुंदर पौधा होता है, जिसके जो पार्ट्स का उपयोग जो है अगर किसी को कांटा चुभ जाए, कांच का कोई पार्ट चुभ जाता है, उसको स्पाइंस हो जाते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसका ड्रॉप बनाकर उसके ऊपर में डाला जाता है, जिससे कि वह रिमूव हो जाता है आसानी से और पेन भी कम होता है। इसके अलावा हेमिडेस्मस एक प्लांट होता है जिसको अनंत मूल कहते हैं, जिसका उपयोग जो है उनके द्वारा जो है पित्त ज्वर के रूप में या तेज बुखार हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे ही लगभग 33 पौधों का जो उपयोग जो है उनके द्वारा मुझे जो है बतलाया गया, जिसका मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा भी उनका जो पूरा जीवन शैली जो है वो जंगलों पर ही वास करता है, जिसके कारण जो है वो 100% जो है फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होते हैं और उनका जो है रहना, उनका खाना पूरे जंगलों पर ही होता है, वहां से ही जो है अपना इकोनॉमिक जनरेट करते हैं। इसके आधार पर उनके पास जो है ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड जो है बहुत सारा ज्ञान है, जिसका डॉक्यूमेंट करना बहुत आवश्यक है। इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है किया जा सकता है और आने वाले रिसर्चर्स को इनका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम। आवाज आ रही है मैम? You are audible. Thank you so much.
for putting up innovative things in indigenous knowledge system of tribes at Madhya Pradesh. Thank you so much. Now, next speaker is Dr. Sujata Kumar from Government Science College, Jabalpur. Are you ready? Fine. Okay, ma'am, you can take your time. By that time, I'm taking names of other students, other faculty members in the list. आप तब तक अपना presentation share करिए, screen share करिए. आप mute है मैडम, unmute करिए अपने आप को. जी, आप Hello. बोलिए. जी. Hello, I हाँ am जी, Dr. बोलिए. Sujata Kumar, Government Science College, Jabalpur, HOD Department of English. Good afternoon, everyone. My topic for this seminar is Innovative Teaching, Learning, Pedagogies. So I have this abstract here. Innovative teaching, learning methods transform education from passive memorizing, listening, communication-based teaching to interactive, speculative, experimental, more enjoyable kind of procedural learning. Each new thought has its access to find its way spontaneously, proceeds with eagerness, even if the results are unsuccessful. Success is not the measure for innovative ideas. Idea itself becomes a mode of thinking, learning, experimenting, and advancing towards unknown methodologies. Facing challenges in life is itself a process towards productivity in thought and action. Thus, our innovative methods consist of first is active experimentation, second, project based learning, third, using elements, games, designs, etc. Fourth, problem solving methods, understanding based activities, creativity and skill development. And last, I've quoted real life experimental knowledge. Thus, real life experimental knowledge forms the base of innovative ideas. Especially the villagers who are more grounded come up with problem solving innovative ideas to improve existing situations with minimum resources. India is a land of vision. To achieve concretization of thoughts, need more modern technology, experience, commitment, and congenial atmosphere where young saplings might grow into strong responsibilities. So this is my short abstract. Thank you, everyone. Next, Thank you, please madam. call Rachna Thakur, madam. Rachna Thakur wants to And share. your presentation and your suggestion of about real life experimental knowledge was really good. With going ahead in the list, we have Dr. Preeti Bala Dongre. Is she present? हमारे लिस्ट में आ Dr. गया था Preeti Bala Dongre. Next in sequence is Dr. Kavita Chahel. Yes, ma'am. Good morning. From Government Science College, Jabalpur. And she is presenting her thoughts on microplants interactions, pathways to sustainable agriculture and ecological development. तब आ गया था You can proceed with your presentation, अरे ma'am, and please abide by the time. हम तो बंद करके बैठे थे अच्छा हुआ तुम्हें हमें सुनाई दे गया Sujata, madam, हाँ please mute yourself. और क्या Sujata, पढ़ दो madam. बस Dr. मेरी Sujata Kumar. स्लाइड Yes, विजिबल है please. Yes, Kavita Chahal, madam, Yes, your ma'am. आपकी slides visible है. आप audible हैं. Please proceed with your presentation.
You can proceed, Dr. Kavita Chahil. Okay, now am I audible? Yes, please. Okay. A very good afternoon to one and all. सभी गुरुजनों, विद्वतजनों और साथियों को मेरा सादर नमन। आज के सेमिनार में मेरा टॉपिक है माइक्रो प्लांट इंटरैक्शंस, पाथवेज टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट। There is a sustainable agriculture is the practice of farming using principles of ecology, and ecology is the study of relationships between organisms and their environment. So there is an urgent need for sustainable agriculture. The question arises, why? Because of global food demands due to soil degradation, because of conventional agrochemicals that we use, and because of excessive use of ecosystems. Hence, the micro-plant interactions offer eco-friendly alternatives to restore balance between environment. So, from the soil beneath our feet to the plants we cultivate, microorganisms silently work their magic. So, मेरे presentation में hero microorganisms and plants है. Now the question arises, how the plant and microbiome communities, how they helps in sustainable environment. So microorganisms may be very micro, but their impact on agriculture is immense. Plants colonizes diverse communities like bacteria, fungi, as you can see in the diagram also, bacteria, fungi are key on leaves as well as roots, such as nitrogen-fixing rhizobacteria and mycorrhizal fungi. Microorganisms have several benefits, like they enhance the nutrient uptake, imparts stress tolerance, and imparts immunity against pathogens. They fixes nitrogen for plants also. Hence, microbe-driven plant interaction sets the nature's defense network as beneficial soil microbes modify plant traits, affecting insect pests also. We have several innovations because microorganisms are very useful in sustainable agriculture. So we have various innovations and engineering in microbiome. Through this engineering, we have plant networks through metagenomics. We are generating microbial communities through AI and gene editing. We have advanced delivery systems through nano delivery and so on. Rhizosphere microbes colonizes roots and gives crop protection. And we have designed or engineered synthetic microbial communities, which are called as syncoms. This is a recent study in 2025. After field trials, it has been shown that syncoms has increased wheat crop production to a large extent, and it has made 30% drought tolerant plants. Similarly, phyllosphere means microbial communities, which surrounds leaf surface. It has reduced fungal diseases in grapes. So embracing the future of food security and ecological balance depends on harnessing the invisible power beneath our feet. These are the references from where I have taken these slides. It has 5th and 6th, my own books. 5th, 6th, and 7th are my own chapters and research papers on the same topic. Hope you find this small journey into the hidden of this microbe a fascinating one. Thank you so much. Thank you, Dr. Kavita Chahil. Thank you. Now, moving forward, I would like to call upon Dr. Rachna Thakur. Is she present?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am here. Am I audible, ma'am? Dr. Rachna Thakur is from Government Science College, Jabalpur. She's presenting her thoughts on glimpses of Bhagavad Gita in Emerson's Brahma and Theodore Walden Pond. Dr. Rachna Thakur, please proceed with your Yes, ma'am. presentation. Yes, ma'am. And please abide by 5 minutes. Ma'am, is my screen is showing? Yes, you Yes. are Okay. audible. Your screen is visible. Please Okay. proceed. Okay. Okay. Okay, ma'am. Good afternoon, one and all present here. I'm Rachna Thakur, Assistant Professor of English, Government Science College, Jabalpur. Today, the topic of my presentation is Glimpses of the Bhagavad Gita in Ralph Waldo Emerson's Brahma and Henry David Thoreau's Walden Pond. My paper explores the influence of Indian knowledge system beyond the borders. I chose two great American transcendentalists, Ralph Waldo Emerson and Thoreau, Henry David Thoreau, who were greatly influenced by the Bhagavad Gita. First, I explain here about the Indian knowledge system. Indian knowledge system has influenced and shaped English literature immensely and deeply. Since the time English-speaking world came in touch with India and Indians, it has absorbed systems, patterns, and ideas of India in multiple ways. Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Thomas Stern, Roland, Davis Basham, E.M. Foster, W.E. Yeats, and a number of others stalwarts have been deeply influenced by Sanatan Indian ideas. According to our Vedas, Upanishads, Atma is one. One consciousness pervades all manifestation in creation. In fact, Param Brahma, Param Shakti, the ultimate reality and the supreme energy manifests herself in all manifestation of creation. One rhythm, one tune, one soul pervades us all living or non-living. The world is one family. The flora, the fauna, the species, the animals, stars, galaxies, matter, particles, elements all come from one source and finally merge into that one source. The eternal dance of creation is a fabric of balance. Nothing is static. The creation is forever moving and its movement it is stable. Such is the nature of reality. This is Advait thought. This is from the core of Sanatan tradition, the Prasthantraya. In English literature, this has been primary appeal of Indian knowledge system to writers. Many writers of English literature have been tapasvis of their own kind. My paper explores the influence of Indian knowledge system beyond the borders. I chose two great American transcendentalists, Emerson and Thoreau, who were greatly influenced by the Bhagavad Gita. First, I chose the poem of Emerson's poem Brahma. Here in this poem, Brahma says that the slayer and the slain are one. Fame and shame are one because they dwell in all beings, in all situations and states of mental being. Brahma says that he is the essence of all discourse, the doubter and also the doubt. There is no need to seek heaven and bliss in this life and life after death because Brahma lives in someone who is good at heart. Such is the profound impact of Sanatan thought on American writers. The focus is mostly on Atma and the oneness of being. Rituals, casteism, and divisions of society have never appealed to writers abroad. They are mostly drawn by the pure and pristine philosophy of Prasthantraya. Hundreds of writers from the West have been enthralled by the elevating Sanatan thought. Second author I chose, Henry
David Thoreau's work, Walden Pond. One of them was Henry David Thoreau. Thoreau is an established and much admired American writer who lived in Concord in the 19th century. His best known work is Walden Pond. It is a collection of essays. This work, beside other forces, is deeply inbuilt. Thoreau writes in Walden, "In the morning I bathe my intellect in the stupendous and cosmogonic philosophy of the Bhagavad Gita, since whose composition years of the gods have elapsed, and in comparison with which our modern world and its literature seem funny and trivial. And I doubt if that philosophy is not to be referred to a previous state of existence, so remote is its sublimity from one conception. I lay down the book and go to my well for water. I meet the servant of the Brahmin, priest of Brahma and Vishnu and Indra, who is still sits in his temple on the Gangas reading the Vedas." Just like that, Thoreau has been influenced by many nations and many streams of thoughts. Indian knowledge system has been one prominent component of this thought. Now I conclude my paper. There are hundreds of examples from English literature where structure of thoughts come from Indian knowledge system. The time has come when Indians themselves realize this wealth of Indian knowledge system and start imbibing its element in their lives and behavior. Thank you. Thank you, Dr. Rachna Thakur. Thank you. Moving ahead, Thank you, ma'am. I would like to call Dr. M.K. Bharadwaj. Yes, ma'am. Dr. M.K. Bharadwaj. He's from Government Science College, Jabalpur. He's sharing his thoughts on role and function of IQAC in higher education. You can share your presentation, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप presentation screen share करेंगे या oral presentation oral देगा? मैम स्क्रीन शो हो रहा है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल मैम? रचना जी आप स्क्रीन शेयर करें। मैम स्क्रीन स्क्रीन शो हो रहा है? नो मैम ओरल प्रेजेंट कर दे रहे हैं मैम। यस इट्स विजिबल। Respected chair, professors and participants, today I am presenting paper on role and function of IQAC in higher education. Everybody please mute the internal quality assurance cell. IQAC is a key component. Okay, ma'am. The internal quality assurance cell, IQAC, is a key component in higher education institution, established to maintain and enhance the quality of academic and administrative process as college and universities strive for excellence. IQAC acts as a central body that sets quality standards, monitors performance, and promotes continuous improvement. It plays a vital role in ensuring that institutions meet accreditation requirements and deliver quality education to students. By fostering innovation, encouraging best practice, and facilitating feedback, IQAC help You are not audible. Dr. Bharadwaj.
Hello. Dr. Bharadwaj, you are not audible. We are taking up our next speaker, Ajay Kumar Rajak. Dr. Rajak, जी मैडम are you there? जी. जी Dr. मैम Ajay Kumar Rajak, he is from faculty from Government Science College, Jabalpur. आप अपने विचार रख रहे हैं शैक्षणिक उद्यमी योजनाएं और वाणिज्य शिक्षा NEP 2020 के तहत छात्र स्टार्टअप को सशक्त बनाने की राह। जी मैडम आप अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं जी और मैम समय का ध्यान रखिए प्लीज। जी मैम ओरल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आवाज सुनाई ओरल दे रही है, आप शुरू करिए। हाँ जी मैम जी। ओरल प्रेजेंटेशन है मैडम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में उद्यमशीलता केंद्रित परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल की है। इस नीति के तहत शैक्षणिक उद्यमी योजनाएं नवाचार संस्कृति, बहुविषयकता और कौशल आधारित शिक्षा के उच्च शिक्षा की मुख्य भूमिका पर स्थान दिया है। विशेष रूप से वाणिज्य शिक्षा के संदर्भ में NEP 2020 ने नई संभावनाओं को द्वार खोलती है, जहां छात्र केवल नौकरी उन्मुख न रहकर उद्यम उन्मुख, आत्मनिर्भर और नवाचार समर्थ नागरिक बन सकते हैं। प्रस्तुत NEP 2020 के प्रमुख उद्यमशीलता उन्मुख प्रावधानों, विश्वविद्यालय स्तरीय इंक्यूबेशन सेल और इनोवेशन सेल की भूमिका, स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन तथा अन्य शैक्षणिक उद्यमी योजनाओं का विश्लेषण किया है। साथ ही वाणिज्य शिक्षा के पाठ्यक्रम पुनर्गठन, उद्यमशीलता कोर्स, कौशल आधारित मॉड्यूल, परियोजना आधारित अधिगम और उद्योग समन्वित गतिविधियों के माध्यम से छात्र स्टार्टअप को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है, इसका विवेचन किया है। वाणिज्य शिक्षा संस्थान NEP 2020 के निर्देशों के अनुरूप इंक्यूबेशन संरचना, मेंटोरशिप नेटवर्क, वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाओं के सक्रिय जुड़ाव विकसित करे हैं, जो छात्र स्टार्टअप को विचार स्तर से मार्केट स्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया अधिक सुगम हो सकती है। विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि NEP 2020 के तहत शैक्षणिक उद्यमी योजनाओं का वाणिज्य शिक्षा का समन्वय भारत के युवा वर्ग को नौकरी खोजने वाला से आगे बढ़कर नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध हो सकता है। इसमें मैडम यही NEP 2020 और इससे जुड़ी शैक्षणिक उद्यमी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य शिक्षा का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से व्यापार, उद्योग, वित्त, लेखा प्रबंधन और बाजार संबंधित है, इसलिए यह क्षेत्र उद्यमियों के लिए सबसे उपयुक्त प्रशिक्षण भी बन सकता है। BCom, BBA, MCom या MBA जैसे कोर्सेज के माध्यम से विद्यार्थी न केवल सिद्धांतात्मक ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि यदि उन्हें उचित मार्गदर्शन और संरचना मिले तो वह व्यावहारिक स्टार्टअप यात्रा की शुरुआत भी कर सकते हैं। NEP 2020 के उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुलक बनाया अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि एक वाणिज्य छात्र केवल लेखा या अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि कंप्यूटर विज्ञान, डिजाइन, संचार कौशल, डेटा एनालिसिस और यहाँ तक कि सामाजिक विज्ञान या मानविक कुछ कोर्स भी पढ़ सकते हैं। उद्यमशीलता के लिए यह बहुविषयकता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक सफल स्टार्टअप के लिए वित्तीय ज्ञान के साथ साथ तकनीकी, बाजार संबंधी और समाज मानसिकता का ज्ञान भी आवश्यक है। इसमें मैडम और है थैंक यू सो मच योजना देखें। अजय रजक जी। I am ready. आपने शैक्षणिक उद्यमी योजनाओं के बारे में बताया, इसके लिए धन्यवाद। इसी के साथ आज का हमारा ये ऑनलाइन सत्र जो कि फैकल्टी के लिए, छात्रों के लिए और शोधकर्ताओं के लिए था, हम आज यहाँ यहीं समाप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कर रही हूँ जो भी अपना प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं और वो रह गए हैं, तो उनको अब हम 2 बजे से 3 बजे के बीच में अब हम उन्हें नहीं लेंगे। कई लोग वो
तो अभी ये Orally बोला सत्र है। हम अभी समाप्त कर रहे हैं। अजय कुमार रजक जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अभी ये ऑनलाइन सत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं और अब समय है हमारे इनवाइटेड लेक्चर सत्र के प्रारंभ होने का, जिसमें हमारे प्रथम इनवाइटेड वक्ता हैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर से हमारे बीच जुड़े हैं और आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्रिएटिंग अ रोड अहेड इस पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की प्राध्यापिका डॉक्टर सपना राय जी से आग्रह करूंगी कि आप कृपया हमारे इनवाइटेड स्पीकर डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी का इंट्रोडक्शन सभी से कराएं। Thank you, Dr. Sapna Ankita Rai. ma'am. Manish Kumar Srivastava, sir. आप प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर से हैं। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज की फैमिली हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव सर serves as professor in the Department of Commerce and as head of the Department of Business Administration at Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University. With over 20 years of teaching experience, his expertise lies in marketing, consumer behavior, and related fields. Dr. Srivastav has an impressive publication record with more than 45 research papers in various reputed national and international journals. He has guided 5 PhD theses and has delivered keynote addresses at various academic forums. Professor Manish Kumar Srivastava is also the first director of the ranking cell of DDU, Gorakhpur University. During his regime, the university has achieved various accolades in national and international rankings, including the NIRF rankings, Nature Index, Times Higher Education, Impact Rankings, and QS Southern Asia Ranking, to name a few. Additionally, he is an active member of various university boards, including the IQAC, NAC, Research and Development Cell, AISHE, and Academic Council. We are very proud to have you, sir, and delighted to hear from you. Sir, please. Thank you, Dr. Sapna. A very good afternoon to all the participants of this national seminar on quest for quality in higher education, use of innovative practices in the context of NEP 2020. Now, first of all, I would like to take this opportunity to express my gratitude to Dr. Shikha Saxena, the principal of Government Science College, Jabalpur, and Dr. R.K. Srivastava, the coordinator of this seminar, and his whole team for inviting me to be a part of this academic exercise. Now, today we are going to discuss a very important theme, and the topic of this theme is entrepreneurial mindset, charting the road ahead. Just give me a time, just give me 2 minutes so that I can share the slide. So are the slides visible? Sir. No. So it's visible now. Now it's visual.
It's visible now, so you can proceed. Okay, thank you. So the topic of this particular session is entrepreneurial mindset charting the road ahead. मैं आप लोग का अभी कुछ presentations देख रहा था. Mainly the presentations were related with the science field, and my topic is a bit something related with the commerce field. Now, if we talk about the new education policy, in the new education policy, a lot of focus has been given on entrepreneurship, how we can develop entrepreneurship skills in our students. तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये particular topic choose किया. Now we all know that as far as India is concerned, we are one of the youngest populations in the world, and rapid economic transportation is the need of this particular hour. Now, if you want to deal with, or if you want to convert our nation, this nation that which is termed as a developing economy, into a developed economy, we will have to convert the job seekers into job creators. और शायद उसी का ध्यान रखते, उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो अभी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की गई है, उसमें प्राइमरली फोकस हुआ है अभी प्राइमरली फोकस है जॉब क्रिएशन पे. हाउ कैन द डेमोग्राफिक डिविडेंड बी converted into a particular what do you call it, how can we convert the job seekers into job creators. इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है. As far as the new education policy is concerned, you can see a paradigm shift in the Indian higher education landscape by embedding entrepreneurship, innovation, and skill development at the core of the academic transformation. अगर हम पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में देखेंगे तो वहां हम देखेंगे वहां पे ज्यादातर फोकस किस चीज पे था, लर्निंग पे बहुत फोकस था. हम लोग के बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लासरूम में पढ़ाए जाते थे और तो फोकस था उन कंसेप्ट्स को स्टूडेंट्स को समझा दिया जाए. लेकिन जब एप्लीकेशन की बात आती थी तो वो एप्लीकेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसिंग था, जिसको इस एजुकेशन पॉलिसी में इम्बाइब करने की कोशिश की गई. Now, this particular education policy focuses on these 4 or 5 things. The first one is creativity, critical thinking, risk taking, innovation, and ethical responsibility. How can we nurture creativity and critical thinking in our students? अब ये बात होती है, लोग कहते हैं कि क्रिएटिविटी जो होती है, क्रिएटिविटी तो इनबॉर्न टैलेंट है, उसको नर्चर नहीं किया जा सकता है, पर इट्स नॉट करेक्ट. क्रिएटिविटी को भी हम शेप अप कर सकते हैं. सो क्रिएटिविटी इज द एसेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्किल. देन क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग, हाउ कैन वी मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स टू टेक रिस्क इन एनी फील्ड. कोई जरूरी नहीं है कि आपसे कोई एक्सपेक्ट किया जाता है कोई आप बिजनेस ही स्टार्ट करें. आप डे टू डे एक्टिविटीज जो भी काम करते हैं उसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश की गई है इस हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में. देन हाउ कैन दिस बी कन्वर्टेड, हाउ कैन क्रिएटिविटी बी कन्वर्टेड इनटू इनोवेशन विद कीपिंग इनटू माइंड द एथिकल रिस्पांसिबिलिटी एट वन टाइम. सो नॉर्मली जब भी हम बात एंटरप्रेन्योर की करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप की करते हैं, क्योंकि शायद यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो नॉर्मली हम ये लेके चलते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज समथिंग रिलेटेड विद बिजनेसमैन. जो बिजनेसमैन होता है वही एंटरप्रेन्योर होता है. तो मेरे सेशन का फोकस इस बात पर रहेगा क्या एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, और क्या ये जो स्किल है ये क्या सिर्फ बिजनेस पर्सन्स में ही होती है या किसी में भी हो सकती है. अगर सिर्फ बिजनेस पर्सन में होती तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि एज फार एज वी स्टूडेंट्स आर कंसर्न, हम सब में सब लोग नहीं बिजनेसमैन बने, कुछ जॉब भी करेंगे और कुछ इस फील्ड की तरफ भी जाएंगे. बट हमारा इस पॉलिसी का, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी इसका मेन एसेंस ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को या माइंडसेट को हम किस तरह से रिजुविनेट करें, किस तरह से जनरेट करें. सबसे बिजनेसमैन सबको बनाने की कोशिश नहीं की जा रही, बट ये हो रहा है कि जो माइंडसेट है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, बीइंग क्रिएटिव, इस चीज को क्या हम अपने स्टूडेंट्स में इम्बाइब कर सकते हैं कि, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं. तो ये हमारे सेशन का प्राइमरी फोकस रहेगा. व्हाट इज एनी एंटरप्रेन्योर?
Now, if you talk about entrepreneur, an entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer, and succeed in a new business venture. अब मतलब तो यही है कि जब भी बात हम एंटरप्रेन्योर की करते हैं, मैंने अभी कहा भी कि जॉब सीकर्स को जॉब क्रिएटर्स में कन्वर्ट कर। अभी इसके पहले सेशन चल रहा था तो कोई कॉमर्स के टीचर थे, वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उन्होंने स्टार्टअप्स की बात की और आज आप सब लोग इस टर्म को बहुत ज्यादा सुन भी रहे होंगे। Now, if I just show you this particular slide, as far as Indian economy is concerned, हमारी देश की पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड 146 करोड़ और जो जीडीपी है हमारा 4.19 ट्रिलियन डॉलर है, 4.19 ट्रिलियन डॉलर। और ओवरऑल हम लोग टॉप 5 इकोनॉमीज में आते हैं वर्ल्ड वाइड। जीडीपी रैंक इन द वर्ल्ड है 4th। और ये हमारे इकोनॉमी का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, हमारी कंट्री का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा अचीवमेंट। ये सब हुआ कैसे? और इसमें हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स का है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और उसमें भी जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, आजकल जो इंडिया को कहा जाता है वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप नेशन अराउंड द वर्ल्ड, शायद 5th पोजीशन है उसकी इसमें, और इसके ओवरऑल इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन 5% है। मतलब 4.19 ट्रिलियन में 5% ह्यूज अमाउंट ये कहीं ना कहीं जनरेट करते हैं। और ये सब कुछ किस वजह से हुआ है? यही जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन, इन सब स्किल्स की बात हम कर रहे थे, इसको इम्बाइब करने से हुआ। तो वाकई में वापस अगर जाएं तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन तो यही है कि एंटरप्रेन्योर इज समवन हु हैज द एबिलिटी एंड डिजायर टू एस्टैब्लिश, एडमिनिस्टर एंड सक्सीड इन द न्यू बिजनेस वेंचर। और जिसके अंदर भी ये स्किल होती है उसको हम क्या कहते हैं? ही इज हैविंग अ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? Entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize and run a business enterprise. जिसके अंदर भी एबिलिटी होगी उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते। तो नेक्स्ट बात ये आई कि अगर किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसका माइंडसेट कैसे होना चाहिए? क्यों नहीं सब लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं? या आजकल हम देख रहे हैं कि आईआईटी आईएम से जो बच्चे निकल रहे हैं, नॉर्मली पहले मैनेजमेंट और टेक्निकल एजुकेशन का कंसेप्ट ये क्या होता था? ठीक है, हम यहाँ से एजुकेशन या डिग्री लेके निकलेंगे और एक अच्छी नौकरी करेंगे। पर आज यही स्टूडेंट्स जब इन इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकल रहे हैं, कुछ दिन जॉब कर रहे हैं एंड फिर दे आर स्टार्टिंग अप देयर ओन वेंचर। ऐसा कैसे? ये चेंज क्यों आ रहा है? ये जो भी इंडिविजुअल्स हैं इनका कुछ माइंडसेट अलग होता है। अब माइंडसेट अलग होता है और जो भी माइंडसेट होता है इसको एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट कहते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब ये डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, सो उस समय 500 की नोट्स को बैन कर दिया गया। अब उसमें ये हुआ कि आपको, आपके पास अगर 500 की नोट है तो आप इसको बैंक में जमा कर दीजिए। बैंक में सुबह सुबह बहुत लंबी लंबी लाइन लगना शुरू हो गई। 10 से 2 ही बैंक ओपन होते थे, लोग सुबह 5 बजे से लाइन लगा लेते। इसी में एक आईटी कानपुर का इंजीनियर था, उसको एक आइडिया क्लिक किया और उसने एक ऐप बनाया और उस ऐप का नाम रखा बुक माई छोटू। बुक माई छोटू मतलब उसने, आप इस ऐप पे जाकर के एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए एक इंडिविजुअल, एक एजेंट या उस छोटू को, जिसको नॉर्मल टर्म होता है, कोई भी बच्चा काम करता है उसको हम छोटू कहते हैं, एक छोटू बुक कर सकते हो अपने ही। वो आपके बिहाफ पे चला जाएगा बैंक में, लाइन लगा लेगा। जब आपका नंबर आने वाला होगा तो आपको कॉल कर दिया जाएगा। आप कहीं पर भी हो, अपने ऑफिस में हो, अपने घर पे हो, वहां पहुंच जाएंगे, वो रिप्लेस, उसकी जगह आप खड़े हो जाएंगे एंड यू विल डिपॉजिट योर मनी। और इसके बदले वो कुछ मनी चार्ज करता था। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस आइडिया वाज अ वेरी क्रिएटिव आइडिया। जो मैंने अभी इसके पहले बताया, मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एसेंस भी है। इट इज वेरी क्रिएटिव आइडिया। उसने उस नीड को आइडेंटिफाई किया कि इतने देर कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो क्यों ना मैं इस तरह की एक सर्विस आपको ऑफर करूं, और अगर लोग इसको करेंगे तो उससे मैं प्रॉफिट भी जनरेट करूंगा। नाउ दिस माइंडसेट इज टर्म्ड एज एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या होता है? जिसके पास भी ये ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है, मोस्टली जिसको हम कहते हैं, लोग नॉर्मल डे टू डे रूटीन में जॉब्स करते हैं, दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क बिकॉज दे फियर लॉस।
उनको डर लगता है कि अगर हम कुछ रिस्क लिए तो हमको ये नुकसान हो जाएगा, या अगर रिस्क जैसे हम हमारे पास मान लीजिए 10 लाख रुपए है तो हम उसको अपने बैंक में रखे रहेंगे या फिक्स डिपॉजिट कर देंगे कि भैया चलो नुकसान तो नहीं होगा, भले ही ज्यादा नहीं कमाएंगे लेकिन नुकसान तो नहीं होगा। दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इज टर्म्ड एज अ ट्रेडिशनल माइंडसेट। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का कोई इंडिविजुअल होता है, ही इज रेडी टू टेक रिस्क, he is ready to identify problems. They see problems in a different manner और उसका कुछ ना कुछ innovative solution निकालते हैं। So अगर किसी के अंदर इस तरह का माइंडसेट होगा, that particular individual will be termed as having an entrepreneurial mindset. अब बात यहाँ पे ये आई कि जो entrepreneurial mindset होता है जिसके अंदर भी होगा उसको हम कहेंगे क्या? जैसे मैंने आपको अगर राइट हैंड स्लाइड में आप देखिए, हमने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन शेयर की। The entrepreneurial mindset refers to certain ways of thinking and living, irrespective of whether the individual pursues a job or is engaged in something else. मतलब क्या हुआ? Those who are having an entrepreneurial mindset, it is not compulsory for them that they will be termed as an entrepreneur. Entrepreneur से मतलब यहाँ पे बिजनेस पर्सन से मतलब आप डे टू डे जॉब भी अगर कोई भी कर रहे हो, अगर इफ यू आर क्रिएटिव, इफ यू आर इनोवेटिव, तब आपको एंटरप्रेन्योर ही माना जाएगा। आपको एक ऐसा इंडिविजुअल माना जाएगा जिसके पास इस तरह का माइंडसेट है। Each individual with an entrepreneurship mindset doesn't need to be an entrepreneur. और इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि आपने सबने शायद मिस्टर ई श्रीधरन का नाम सुना हो, नहीं सुना है तो मैं आपको बता रहा हूं। ही इज एन आईएएस, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब करते थे, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन ही इज टर्म्ड एज अ मेट्रोमैन बिकॉज दिस पर्सन वाज बिहाइंड दिल्ली मेट्रो। आप सब लोगों ने, हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने दिल्ली मेट्रो को एक्सपीरियंस किया होगा। अब ये इंडिविजुअल था, एक आईएएस थे, तो ये एक सेक्रेटरी लेवल के इंसान थे, जॉब करते थे, इनको सैलरी मिलती। लेकिन जब दिल्ली गवर्नमेंट, जब उनके सामने एक प्रॉब्लम आई कि दिल्ली में जिस तरह की जैम्स, ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या निकला? तो फिर हुआ कि जिस तरह से मुंबई में एक मेट्रो है, तो व्हाई नॉट इन दिल्ली? लेकिन दिल्ली वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम मुंबई। अगर आप इसके ज्योग्राफिकल स्टडी करिए, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मुंबई। तो वहां पे कैसे हम मेट्रो को लॉन्च कर सकते हैं? तो दिस पर्टिकुलर पर्सन मेड दैट होल प्लान, और आज मेट्रो, दिल्ली मेट्रो इज वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो ऑफ आवर कंट्री। और क्यों था? एक इंडिविजुअल जो जॉब कर रहा है, उसके पास उस ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ काम करता तो कभी नहीं कर पाता। उसके पास वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी, वो क्रिएटिविटी थी, और उस क्रिएटिविटी को कैसे हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, ये स्किल था। That is why that job seeker, that employee can also be termed as an entrepreneur because he is having that mindset. तो यहाँ पे एक बात जरूर समझना चाहिए कि आजकल के आज हमारी जो टीचिंग पेडागॉजी है, वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों की क्रिएटिविटी को हम किल ना करें। एक समय कभी था जब हमने एक बच्चे को सुना था, क्या कोई एक ऐसा लैपटॉप नहीं आ सकता जिसमें 2 स्क्रीन? तो वहां पे सब लोग बैठे जो थे उस पे हंसना शुरू कर दिया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या बात कर रहा है। ये जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज होते हैं ना, देखिए आज की डेट में दैट इज वी कैन हैव अ लैपटॉप हैविंग 2 or more than 2 स्क्रीन्स। ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि एक साथ ही हम 2-3 स्क्रीन पे काम कर सकते हैं। उस समय जिस आइडिया पे हम सब हंसते थे, वो आज एक प्रोडक्ट के फॉर्म में अवेलेबल है। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी चीज को नर्चर करती है कि क्रिएटिविटी को किल मत करें। भले ही आप जॉब सीकर बनते हो या जॉब क्रिएटर बनते हो, ये माइंडसेट जरूर डेवलप होना चाहिए। और इसी वजह से शायद जो मैंने आपको बताया, आजकल लोग अच्छी कॉलेजेस से डिग्री लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इकोसिस्टम तो डेवलप हुआ ही है, और दैट्स व्हाई दे आर डेवलपिंग अप देयर ओन, दे आर रनिंग अप देयर ओन बिजनेसेस। एक दिन मैं कहीं पे ऐसे बाजार में सब्जी खरीदने निकला था, तो वहां पे एक ठेले वाला नॉर्मल सब्जी बेच रहा था, और बगल में एक ठेले वाला क्या किया उसने, वो उसी सब्जी को आधा किलो के पैकेट में पैक करके बेच रहा था।
आधा किलो 1 किलो अलग अलग तरह के पैकेट में पैक करके बेच रहा था। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो। एक पर्सन है जो एक नॉर्मल बिजनेस पर्सन, जो 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 सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं उसी तरीके से बिजनेस कर रहा है। तो जो मैंने दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग अ ट्रेडिशनल माइंडसेट, जैसे किया जाता है काम हम वैसे ही करेंगे, उसमें कुछ इनोवेशन नहीं डालेंगे। उस हम इंसान को हम क्या कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं, बिकॉज ही इज हैविंग दैट ट्रेडिशनल माइंडसेट। अ बिजनेस पर्सन ट्राइज टू रन एन ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस विद ओल्ड कन्वेंशनल वेज। और बगल में वही कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं रहा होगा, लेकिन वही जो दूसरे उसके बगल में ठेला लगाया था वो अलग अलग पैकेट में उसको पैक करके सब्जियां बेच रहा। एक तो वहां पे टाइम कम लग रहा था, अच्छे पैकेट में पैक करके बेच रहा था, तो भले ही तुम हमसे 2 रुपए ज्यादा भी ले ले, जो कस्टमर्स हैं वहां उससे लेने को तैयार थे। टाइम बड़ा कम लग रहा था। अच्छा, नॉर्मली आधा किलो 1 किलो इसी तरह से लोग सब्जी खरीदते हैं, वो उसने कुछ वैसे तरह के पैकेट्स बनाए हुए। तो दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन बी टर्म्ड एज हैविंग एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। कोरोना टाइम पीरियड में देखिए जब क्या हो गया, जैसे कहते हैं ना, जब आदमी को पानी में छोड़ दिया जाता है तभी वो तैरना सीखता है। जब ये जो ऑफलाइन बिजनेसेस पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगा, तो यही जो आपका जनरल ग्रोसरी स्टोर था, जहां पे जो आपको जब आप उसके स्टोर पे पहुंचते थे और फिर वो सामान खरीदते थे और घर आते थे, उसने भी व्हाट्सएप और अदर मीन्स से हेल्प ले करके, ये जो ऑनलाइन मोड्स होते हैं, सोशल मीडिया होता है, उससे हेल्प लेके वो ऑर्डर लेता था और आपके घर तक सामान पहुंचाता। तो वही जो नॉर्मल बिजनेसमैन था वो एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट हो गया था। मतलब एक ट्रेडिशनल माइंडसेट was converted into an entrepreneurial mindset। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है anybody? बिल्कुल सर, it's quite motivating. So anybody who is doing business, you cannot term that particular business person as an entrepreneur. Every entrepreneur can be termed as a businessman, but every businessman cannot be termed as an entrepreneur। और फर्क क्या है दोनों में? माइंडसेट का फर्क। And that mindset means traditional mindset एक एंड पे है, जहां पे वो आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके अंदर नहीं होती है, नॉर्मल मोड ऑफ बिजनेस को आप फॉलो करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड आप एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक जो उसी प्रॉब्लम को नए तरीके से देखता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर नए आइडियाज आएंगे, दैट इज क्रिएटिविटी, और उसको वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करता है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की खासियत है। ये जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है वो किसी के अंदर भी हो सकता है। It can be in a particular person who is doing a job or who is running up their business. Hello? हाँ हाँ तो अब ये नेक्स्ट बात जो आई कि क्या ये जो बिजनेसमैन होते हैं, मैंने जो आपको बताया, बिजनेसमैन के पास तो ट्रेडिशनल माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योर के पास एक डिफरेंट रिस्क टेकिंग माइंडसेट है। तो बिजनेसमैन तो कुछ सेकेंडरी काइंड ऑफ सिटीजन हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दे आर प्लेइंग अप देयर ओन रोल, और ये जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, दे आर प्लेइंग अप देयर ओन। आप ये नहीं कह सकते हो कि बिजनेसमैन इज लेस इंपॉर्टेंट देन एनी एंटरप्रेन्योर। An ordinary business person is also important to the society as an entrepreneur। Entrepreneur क्या होता है? They works on an innovative idea, जैसे बात मैंने आपको अभी बताई, और ट्रेडिशनल स्पोक्सपर्सन एक रेगुलर आइडिया पे काम करता है ऑन अ बिग स्केल। जैसे जनरल ग्रोसरी स्टोर्स को अगर हम कह देते हैं कि नॉर्मल बिजनेस पर्सन है, तो वो भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपके मोहल्ले में वो जनरल ग्रोसरी स्टोर की दुकान नहीं होगी तो आप कहाँ से सामान खरीदोगे? सो बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी डिमांड को कैटर करने के लिए हमको बिजनेस पर्सन की भी जरूरत है, और उसको इनोवेटिव तरीके से कैटर करने के लिए हमको एंटरप्रेन्योर की जरूरत है। तो डोंट एवर confuse or don't ever think that business person are less important than entrepreneur। But yes, entrepreneurs की आज हमारे कंट्री में ज्यादा जरूरत है, बिकॉज हमारा मार्केट बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड होते जा रहा है। हमको भी सबको क्रीम चाहिए, लेकिन सबको एक तरह की क्रीम नहीं चाहिए। सबको क्या कहते हैं, जैसे हम लोग अक्सर चाट वाट के ठेले पे जाते हैं एंड वी गो फॉर दैट, क्या बोला जाता है, वो पानी पूरी, और उसमें किसी को तीखा चाहिए होता है, किसी को मीठा चाहिए होता है। तो कस्टमर्स डिफरेंट तरीके होते हैं। आजकल देखिए इन कार्ड्स पे देखेंगे अलग अलग तरह के वाटर आते हैं। पहले तो बस वो
जीरा जल्दी आता था, अब तो पता नहीं कितने ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। अब क्या कहते हैं, खटाई वाला अलग होता है, डिफरेंट तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है आपके सामने। तो ये क्या है, ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जिनके पास होता है वो ये चीज ऑफर करना शुरू किया है। अब यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट आवर एजुकेशन पॉलिसी, अगर हमको एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट को प्रमोट करना है, देन वी हैव टू फोकस ऑन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इन दो चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ा। अब यहाँ पे बात आई व्हाट इज क्रिएटिविटी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्रिएटिविटी, it is concerned with the generation of new idea and innovation, and that generation of new idea. Creativity मतलब कुछ भी आप सोचो, एक कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आता है, so that idea can be termed that you are a creative person. Innovation क्या होता है? Innovation translates this new idea into a new product. Now, every creative idea cannot be converted into a product. For example, जैसे टाइम मशीन की बात करें, हम सब सोचते हैं कोई ऐसी मशीन डेवलप कर ली जाए कि जिसमें हम पास्ट में जा सकें, फ्यूचर में जा सकें, जहां जाना हो हम जा सकें। बट वेदर इट कैन बी मेड और नॉट, यस, ये जरूरी है कि आपको सोचना तो पड़ेगा, सोचना पड़ेगा तभी आप एक इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो भी आप सोचते हो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। बट व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन? इनोवेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट क्रिएटिविटी। If you talk about Steve Jobs, एप्पल कंपनी के ओनर थे, उनको लोग पागल समझते थे, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हम दुनिया को दिए हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट आईफोन, इफ यू टॉक अबाउट आईपैड, इफ यू टॉक अबाउट आईपॉड, कई MP3 प्लेयर उनका आईपॉड था। टैबलेट जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, दैट वाज आईपॉड, आईपैड। और आईफोन जो आपने देखा, अब आपने देखा होगा कि आईफोन है क्या। जिस दौर में आईफोन लॉन्च किया गया था, उस समय ब्लैकबेरी एक कंपनी थी, उसके QWERTY कीपैड वाले फोन्स आते थे जिसको बिजनेस फोन कहा जाता था। बिजनेस फोन का क्या मतलब होता था? ये नॉर्मली बिजनेस ऑफिशियल्स के पास हुआ करते थे। बिजनेस ऑफिशियल्स कौन हो गए? जो भी कोई कंपनी के बिजनेस को रन करने वाले, टॉप मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग। नॉर्मल लोगों के पास वो नॉर्मल फीचर फोन जिसको कहते हैं, जो जिसको आप कहते हैं 1 2 3 4 5 6, जो आपका कीपैड आता था, कीपैड वाला फोन। और जो ऑफिशियल इस तरह के टॉप ऑफिशियल्स थे, वो QWERTY कीपैड वाला फोन यूज करते थे, जो ब्लैकबेरी वाज अ कंपनी व्हिच ऑफर्ड, उसमें नेट कनेक्शन भी हुआ करता था। उस समय उसका नाम स्मार्टफोन नहीं था, जो आज की डेट में हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो स्टीव जॉब्स ने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और उसने कहा कि मुझे एक ऐसा फोन लॉन्च करना है जिसमें सिर्फ एक बटन। आज के फोन में देखिए स्क्रीन पे कोई बटन नहीं होता। देखिए, ये है क्रिएटिविटी, ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। क्या हम एक ऐसा फोन लॉन्च कर सकते हैं जिसमें सिर्फ एक बटन हो, बाकी सब चीज स्क्रीन में टच करके, अगर हमको मान लीजिए कोई फोटो इनलार्ज करनी तो उंगलियों का यूज करके, ऐसे करके हम कर सकते। तो जब इंजीनियर्स इसीलिए उसको पागल समझते थे, वो बस एक आइडिया बताता था कि हमको ऐसा करना है, वो ये नहीं बताता था सी लैंग्वेज में हम इसको कैसे करें। हमने आपको एक कंसेप्ट दे दिया, अब आप इसको इनोवेटिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। देखिए, इसीलिए क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। उस इंसान के पास वो क्रिएटिविटी नहीं होती तो आज जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं वो शायद हम यूज नहीं करते। MP3 प्लेयर जिसको उसने आईपॉड जो लॉन्च किया, बहुत ही छोटा सा आईपॉड होता है, रेक्टेंगुलर, उसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं। एट दैट टाइम सोनी का वॉकमैन बहुत पॉपुलर था। पहले स्टीरियो सेट्स आते थे, बड़े बड़े स्टीरियो सेट्स होते थे। उसके बाद सोनी का वॉकमैन आया, एक छोटा सा डिवाइस होता था, उसमें आप कैसेट डाल करके आप उसको प्ले करके म्यूजिक सुन सकते थे। फिर इसने कहा कि नहीं, और छोटा होना चाहिए, लोग इधर से उधर जब ट्रैवल करते हैं तब दे लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। तो उसने अपने इंजीनियर्स को फिर कहा कि आप एक ऐसा डिवाइस बनाइए। उनके इंजीनियर्स एक डिवाइस बना करके ले भी गए, तो उसने कहा नहीं, इसके साइज और कम करिए। तो उसके इंजीनियर्स फिर परेशान हो गए, नहीं अब नहीं कम हो सकता। तो उसने जो डिवाइस बना के ले गए थे, उसको उसने तुरंत ही वहीं पे एक एक्वेरियम था, उसमें पानी में फेंक। जब एक्वेरियम में पानी में फेंक दिया तो उसमें से बबल निकल के आने लगे। तो उसने कहा देखिए, अगर बबल है तो उसके अंदर इसका मतलब खाली स्पेस भी है, तभी पानी जब उसके अंदर जा रहा हो फिर निकल के आ रहा है। उस स्पेस को कम करिए, अपने आप साइज कम हो जाएगा। देखो, क्रिएटिविटी एंड हाउ इट गॉट कन्वर्टेड इनटू इनोवेटिव। सो दिस इज
द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, और उस एंटरप्रेन्योर ने इस दुनिया को क्या दिया। सो विदाउट क्रिएटिविटी एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं कि नहीं मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो ठीक है, ट्राई टू थिंक ऑन इट, और कैसे करोगे। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग लाइन के, तो आप ये हो सकता है आपके अंदर उस तरह के आपके पास टेक्नोलॉजी है, यू नो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आइडिया किसी और के पास भी आ सकता है। उल्टा फॉर एग्जांपल अगर आप सब लोग शायद डेयरी मिल्क शॉट्स का यूज करते हो, डेयरी मिल्क शॉट का आइडिया उस कंपनी के ड्राइवर के दिमाग में आया। उस समय पर्क वर्क चलती थी, तो उसने कहा कि पर्क तो बहुत बड़ी होती है, आजकल लोग बड़े कैलोरी कॉन्शियस है, क्यों ना गोल गोल छोटे छोटे इस तरह का चॉकलेट लॉन्च की जाए। तो जो आप ऐड देखते हो, मन में लड्डू फूटा, सो वो डेयरी मिल्क शॉट, वहां से ड्राइवर के दिमाग में आइडिया आया था। क्रिएटिविटी देखिए किसी के पास हो सकती है, एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, और रेस्ट इज हिस्ट्री। So innovation is the transformation of creative idea into useful applications, but creativity उसका raw material होती है. It is a prerequisite to innovation. Without creativity, innovation is not possible. तो आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया होता है तो उसको तो तुरंत वाइप ऑफ मत कर दिया करें। पता नहीं कौन सा आइडिया कल को कितना बड़ा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। So innovation just not means doing new things, it is also doing things that are already existing in a new way. Innovation का मतलब यही नहीं होता हमेशा आपको कुछ नई नई चीज दे के ही चली जाएगी, नया नया प्रोडक्ट ही बना देना। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें भी कुछ चेंजेस कर देना। गोरखपुर में टेराकोटा बहुत ही पॉपुलर है, यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम है, आपने भी शायद नाम सुना होगा। और हमारे गोरखपुर का जो मेन प्रोडक्ट है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, उसका टेराकोटा के आइटम्स, इसी टेराकोटा की बहुत सी सुराहियां, घड़े और ये सब भी बनते हैं। जिस समय ये सुराहियां बड़े पर्टिकुलर खास मौसम में ही लोग उसको परचेज करते हैं, जब यहाँ पे पछुआ एक हवा होती है, वो जब चलती है तो गर्मियों में वो चलती है, तो जब वो चलती है तो फिर उस समय ये घड़े खरीदे जाते हैं और वो बहुत ठंडा पानी देते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या आती थी, इन घड़ों को जब अगर आपको पानी ग्लास में पोर करना है तो आप घड़े से, या तो फिर आपके पास कोई बर्तन हो जो उसमें से डाल करके निकालें, घड़े या सुराही आते, या तो फिर आपको उसको थोड़ा सा टिल्ट कर करके ग्लास में लाना पड़ता था। अक्सर इस प्रोसेस में हो क्या जाता था कि वो सुराहियां गिर जाती थी, टूट जाती। बात सही भी है, टूट जाएंगी, फिर जब टूटेंगी तभी आप नया भी खरीदोगे। उसी टाइम पीरियड पे एक कंपनी मिल्टन भी थी, मिल्टन के कूल केक बड़े पॉपुलर हुए। कूल केक, पानी थोड़ा ज्यादा देर तक ठंडा रहता। अब ये जो टेराकोटा के जो नॉर्मली कुम्हार हैं जो इनको बनाते हैं, इन्होंने देखा कि मिल्टन के कूल केक में सामने छोटा सा टैप लगा है, और उस आपको टैप अगर है, टैप को ओपन करिए, ग्लास में पानी पोर करिए, टैप को क्लोज करिए। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया, क्यों ना वो जो टैप है वो हम अपने इसमें भी इंसर्ट कर लें, घड़े या सुराहियों में, और उन्होंने वो टैप लेकर के इसमें इंसर्ट करना शुरू किया, और उसके बाद उसकी सेल ड्रास्टिकली बढ़ गई। तो देखिए, इनोवेशन डज नॉट मीन डूइंग always offering a new product, always making a new product, but you can also make certain changes in the existing product and increase the value of the product. So that is also innovation. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Okay, so the next thing is how many types of innovations are there? Now, if you talk about innovation, we can categorize innovation into two categories. The first one is technical innovation, and the second one is non-technical innovation. अगर हम टेक्निकल इनोवेशन की बात करेंगे तो ये तो प्योर इनोवेशन होते हैं, न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है। जब भी कोई चीज सबसे पहली दफे दुनिया में लॉन्च की जाती है, फर्स्ट फोन, फर्स्ट टीवी, फर्स्ट कंप्यूटर या फर्स्ट इंटरनेट सर्विस जब भी लॉन्च की गई होगी तो उसको टोटली न्यू प्रोडक्ट कहते हैं। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेक्निकल इनोवेशन। नॉन टेक्निकल इनोवेशन क्या होता है? वो प्रोसेस रिलेटेड इनोवेशन, मतलब जो वो चीज पर्टिकुलर लॉन्च ऑलरेडी हो गई थी लेकिन हम उसके प्रोसीजर में कुछ चेंज करते हैं,
जिससे दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकम्स मोर एफिशिएंट। तो जो मैंने आपको बताया कि इनोवेशन का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि न्यू प्रोडक्ट ही लॉन्च कर रहे हैं। नए प्रोडक्ट को कुछ अलग तरीके से अगर हम लॉन्च करते हैं तो दैट विल आल्सो बी टर्म्ड एज इनोवेशन, बट इट विल कम अंडर नॉन टेक्निकल इनोवेशन कैटेगरी। ये इस कैटेगरी में आता है। तो आप दोनों तरीके से सोच सकते हो। आप ये भी सोच सकते हो कि हम कोई नई चीज, कोई नया सर्विस हम ऑफर करेंगे, या जो चीज है सामने उसमें ही हम कैसे चेंज कर सकते हैं। आपका ये सेमिनार हो रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है। एक दौर था जिसमें सब चीज ऑफलाइन मोड में ही होती, लेकिन ये कोरोना ही ने हम लोगों को सिखाया कि एवरीथिंग कैन इज पॉसिबल थ्रू द ऑनलाइन मोड। और चूंकि उस समय नीड ऑफ द आवर ऐसी थी, उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज में भी बहुत तरह का इंप्रूवमेंट हुआ। पहले अक्सर टेक्निकल ग्लिचेस आते थे, इसका लोग फायदा भी उठाते थे, लेकिन क्या कहते हैं, अब देखिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव कर गई। तो वही चीज जो पहले ऑफलाइन ही अवेलेबल थी, नाउ इट इज अवेलेबल थ्रू द ऑनलाइन। और इसका फायदा एकेडमिक फ्रेटर्निटी को तो बहुत ज्यादा हुआ है। पहले अगर मुझे आईएम के किसी लेक्चर की प्रोफेसर का लेक्चर कराना होता था, इट वाज अ कॉस्टली अफेयर फॉर अस। हमारे तरफ के बच्चे, पूर्वांचल के बच्चे उनसे बेनिफिट ले ही नहीं पाते थे। या आजकल आपके देखिए स्वयं प्लेटफॉर्म पे और भी ना जाने कितने प्लेटफॉर्म से उस पर बहुत सारे कोर्सेज मटेरियल अवेलेबल। तो पहले करने के लिए हमको उनको इंस्टीट्यूट्स को विजिट करना पड़ता था, और वहां जाके जब उनके प्रोग्राम में एनरोल होते थे तभी आई कैन गेट अ डिग्री और आई कैन गेट अ नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर। लेकिन आज आप मध्य प्रदेश में बैठे हुए या मैं उत्तर प्रदेश में बैठे हुए इन्हीं आईआईटी आईएम्स के प्रोफेसर्स के मॉड्यूल्स को स्टडी करके उनसे सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। जैसे मैंने एक बात की, अगेन इट इज अ इनोवेटिव प्रोडक्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बिजनेस फील्ड, तो यहाँ पे बहुत हमने 5 ऐसे आइडियाज को लिया है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट, ओला कैब्स, फार्म इजी, मीशो एंड ग्रो। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को लिया है। हाउ दे आइडेंटिफाइड द गैप इन या द नीड गैप इन द मार्केट एंड दे लॉन्च देयर प्रोडक्ट। अब हम बात करें क्रेड की बात करें तो क्रेड इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स एंड गेट रिवॉर्डेड फॉर इट। क्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आपको पेमेंट करना है, अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है या किसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो, तो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर पेमेंट करते हो तो वो आपको कुछ रिवॉर्ड्स दे। मतलब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, देखते तो क्रेडिट तो वैसे ही लोन होता है, उसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा। उस रिवॉर्ड को फिर आप कन्वर्ट शॉपिंग में यूज कर सकते हो या उससे कोई प्रोडक्ट पा सकते हो। सो हमको पेमेंट करने का भी रिवॉर्ड मिल रहा है। और अगर बस हमको डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट नहीं करना है, हमको क्रेडिट प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट करना है। जब से इन्होंने ये सर्विस लॉन्च की तो कस्टमर को पेमेंट करने पे भी बेनिफिट मिलने लगा। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ओला कैब्स की बात करें, पहले भाई अगर इंडिया की बात करें तो टैक्सी सिस्टम वाज टोटली फंक्शनिंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपको टैक्सी कॉल वॉल अगर आपको बुक करनी होती थी तो आपके शहर में जो भी टैक्सी ओनर्स थे जिस रेट पे भी वो कहते थे हमको उस, और जैसी भी सर्विस वो दे दे, कभी अच्छा ड्राइवर होता था, कभी अच्छी कार कंडीशन है नहीं है, उस बेसिस पे हमको अवेल करना ही पड़ता था, ऑप्शंस नहीं अवेलेबल। बट देन ये ओला उबर और सर्विस जब से इंडिया में लॉन्च हुई है, सो इनका कमीशन फिक्स है। अच्छा, इनका बिजनेस मॉडल भी बड़ा अच्छा है। दे नीड नॉट हैव टू ओन द कार्स। उनको इसी तरह से जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, जो होटल वाला है, ओला कैब्स एंड क्या नाम है, ओयो होटल्स। अगर ओयो होटल्स की बात करें, वो भी इसी तरीके से, ओयो होटल्स के खुद के नॉर्मली होटल्स नहीं होते। वो नॉर्मली करते क्या है, किसी भी होटल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ रूम्स को अपने नाम पे बुक करते हैं एंड दे स्टैंडर्डाइज द सर्विस कि वो रूम्स जैसा मैं कह रहा हूं वैसा होगा। आई विल ब्रिंग कस्टमर्स फॉर यू एंड यू विल हैव टू पे कमीशन फॉर मी। यू विल हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ, जो भी आप अर्न कर रहे हो उसमें से कुछ कमीशन आपका मेरा होगा, मैं आपके लिए कस्टमर्स लेके। कस्टमर क्या है, ओयो की वेबसाइट पे जा करके रूम बुक करता है। रूम का भाई ये बात सही है, रूम स्टैंडर्डाइज होंगे, नीट एंड क्लीन होंगे, जो सर्विसेज ओयो ने कहा है वो हर होटल को ऑफर करना पड़ेगा। बट ओयो इज अ ब्रांड, लोग जानते हैं कि इफ दे आर बुकिंग रूम इन एनी दिस सिटी दे आर गोइंग टू गेट द सेम काइंड ऑफ फैसिलिटीज। वो उसके थ्रू बुक करते हैं, होटल को भाई कस्टमर मिल रहे हैं, उसके बदले वो उनको कुछ कमीशन दे देता है।
अगेन देखिए एक नीड गैप जो था ओयो ने उसको आइडेंटिफाई किया और आज देखिए ओयो कितना बड़ा ब्रांड। इसी तरह से फार्मेसी है, फार्मेसी दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑनलाइन फार्मेसी। अब तो वो डॉक्टर्स फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। सो जो आप जा करके, बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो ऑनलाइन जो जा करके दवाइयां नहीं खरीद सकते हैं, या दे आर आल्सो गिविंग गुड रिबेट्स, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ओवर द काउंटर ड्रग्स जो है वो यू कैन परचेज इट थ्रू देम। और अगर ओवर द काउंटर नहीं भी है, सो विद द हेल्प ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यू कैन परचेज मोस्ट ऑफ द मेडिसिन, और आप उसमें अच्छे खासे डिस्काउंट भी आपको मिल जाए। Meesho is a social commerce enterprise. It has provided a platform for resellers to connect with manufacturers. मीशो पे अगर आप कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस है, आप उद्यम में या कहीं अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसके बाद जो है आप मीशो प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्रोडक्ट्स को मीशो प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर सकते हो। आपके पास अपनी अपनी वेबसाइट नहीं है, कोई बात नहीं, आप मीशो पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करें। तो मीशो इज प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, इसीलिए सोशल कॉमर्स एंटरप्राइज। एंड फाइनली ग्रो, अगर किसी को भी स्टॉक एक्सचेंज में भी है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का आइडिया होगा, सो ग्रो इज अ इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म दैट अलाउज द कस्टमर टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। पहले क्या होता था, हमको ब्रोकर्स के पास जाना पड़ता था हमेशा, और अगर हमको किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो वो फॉर्म भरवाते थे, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो पूरा फॉर्म भरवाएंगे, फिर जमा होगा और फिर जाकर के हमको म्यूचुअल फंड अलॉट। ग्रो, जीरोधा, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म है जो अगेन दे आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें आप अपने फिंगर टिप से एक दफे अपना उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपके नाम पे जितने भी म्यूचुअल फंड जो शेयर्स होंगे सब आपको उस पर दिखाने लगेगा, क्योंकि आजकल हर चीज पैन कार्ड से आपके कनेक्टेड है, वो सब कुछ आपको उस पर दिखने लगेगा। तो आपको तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल गई, जो आपने हजारों जगह इन्वेस्टमेंट किए हैं स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में अलग अलग रजिस्ट्रार्स के थ्रू, वो सब एक जगह दिखने लगे। फिर अगर आपको कोई भी परचेजिंग करनी है, सेलिंग करनी है, आप इसी ऐप के थ्रू सेल कर सकते हो। कहीं भी आपको, जो पहले हम लोग शीट्स में मेंटेन करते थे, इस कंपनी में इतना इन्वेस्ट किया, ऐसा किया, कुछ नहीं करने की जरूरत है। एवरीथिंग Sir, you are not audible. Excuse me, sir, you are not audible. There is some technical glitch at the side of Dr. Manish Srivastava ji. Just a minute, ma'am. Yeah. Welcome back, sir. Everybody's patience is highly appreciated. We are very thankful.
सॉल्व कर देना। So visible. Screen is visible. Hello. So whether the slides are visible? Yes, sir. It's visible. You can proceed, sir. Hello. So you can proceed. Yes, sir. Thank Slide you. is visible. Okay, thank you, ma'am. Thank You you. are audible. So now अब एक नई चीज आती है कि अगर if any of the students who are a part of this seminar, if they want to start up their own business, अगर किसी के मन में भी ऐसा आइडिया आता है कि हम आगे इस तरह का बिजनेस करेंगे, तो नेक्स्ट चीज फिर यही आती है कि किस एरियाज में हमारे सामने ऑप्शंस अवेलेबल। ऑप्शंस आज की फील्ड में हर एरिया में अवेलेबल है। अगर आप कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं स्पेशली, तो पहली तो चीज है, अगर आप अकेले हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो। यू विल हैव टू मेंटेन योर बिल्ड अप अ नेटवर्क। एक एमबीए स्टूडेंट हो, उसको टेक स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, टेक स्टूडेंट्स को एमबीए स्टूडेंट्स के साथ या कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, आर्ट स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी तरह की स्किल्स है। एक अगर टेक का स्टूडेंट होता है तो उसके पास एक आइडिया होता है, वो उसको एक इनोवेटिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन जब ये जो मार्केटिंग या कॉमर्स का स्टूडेंट होता है, उसको कैसे सेल करना है, कैसे पिच करना है, ये उसके पास आइडिया होता है। तो यू विल हैव टू कोलैबोरेट विद ईच अदर। आइडियाज किस किस फील्ड में है? सबसे पहले अगर हम बात करें ई कॉमर्स की फील्ड में, इस ई कॉमर्स में अगर हम बेस्ट एग्जांपल फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का अगर आपको दें, या अमेजोन की बात करें, तो दे आर ई रिटेलर्स। अमेजोन का फंड ये है कि A to Z हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं विच वी कैन सेल इट थ्रू दिस पर्टिकुलर रूट। दे आर नॉट इनटू द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स के सामान को अपने थ्रू रूट कर देते हैं फाइनल कंज्यूमर्स की तरफ। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा भी देखा। अच्छा, मिंत्रा देखिए, अमेजोन जहां A to Z की बात करता है, मिंत्रा वहां सिर्फ अपैरल्स पे फोकस करता है। उसका प्राइमरली है कि वी आर इनटू द रिटेलिंग बिजनेस ऑफ सेलिंग दिस थिंग, गुड ब्रांडेड अपैरल्स। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ टेक स्टार्टअप्स भी होते हैं। यू कैन स्टार्ट अ हेल्थ टेक स्टार्टअप, और इसमें बेस्ट एग्जांपल प्रैक्टो, पोटिया एंड 1mg का है, टाटा 1mg। या अभी मैंने थोड़ी देर पहले फार्मेसी का आपको एग्जांपल दिया था। या आजकल आपने देखा होगा कि इन सब में अपोलो और इन सब के भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी एप्स भी हैं। अगर आप एक डॉक्टर जो कि बैंगलोर में बैठा हुआ है और आप गोरखपुर या मध्य प्रदेश जबलपुर में रहते हो, उनके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं या उनसे कंसल्ट करना चाहते हो, तो पहले तो आपको उनकी क्लिनिक पे जाना पड़ता था। बट आजकल ऑनलाइन कंसल्टेंसी ऑप्शंस भी अवेलेबल। आजकल तो ऑपरेशंस भी ऑनलाइन, डॉक्टर अमेरिका में रहता है, इंडिया में ऑपरेशन हो रहा है, उनके सजेशंस के बेसिस पे ऑपरेशंस भी हो जाते हैं। तो हेल्थ टेक की फील्ड में भी। देन फिनटेक, फिनटेक है मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की फील्ड में। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की फील्ड में तो ऐसा इतने ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जिसमें इंडिया इज वन ऑफ द पायनियर। जिसमें हम पेटीएम की बात कर लें, फोन पे की बात कर लें, ये सर्विस जितना ज्यादा, ये इंडिया से ही कहीं ना कहीं इमर्ज हुई, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू कॉपी इट। पेटीएम क्या था? यू कैन अटैच योर, या गूगल पे से आप पेमेंट करते होंगे, फोन पे से, तो अगेन इट इज एन एप्लीकेशन। आपका बैंक अकाउंट इसके थ्रू जुड़ा हुआ है, आप कहीं पे जाइए, उनके बारकोड को स्कैन करिए, आप पेमेंट कर सकते हो। सो इट इज प्रोवाइडिंग यू फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। देन अगर हम बात करें एडटेक, एजुकेशन की फील्ड में, तो अगेन बहुत ज्यादा एक कहना से रेवोल्यूशन ही आ गया है। बायजूस ने अपना लॉन्च किया, अनअकैडमी ने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस लॉन्च किए। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में इंटर के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए जाते हैं, और उसके लिए पूरी कोचिंग की पूरी एक इंडस्ट्री है। और इस कोचिंग सर्विसेज को अवेल करने के लिए क्या होता था
इस कोचिंग सर्विसेज को अवेल करने के लिए ज्यादातर बच्चों को बड़ी सिटीज में जाना पड़ता था, बड़ी सिटीज में जाना पड़ता था। सो इफ यू टॉक अबाउट, ये किसी ने कुछ लिखा है ट्राई एनोटेटिंग, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या स्क्रीन में? हेलो, ओके नो। सो एडटेक की फील्ड में बायजूस और अन अकेडमी है। रूरल बैकग्राउंड या स्मॉल सिटीज का बच्चा है, अगर उसको ये इस तरह की ऑनलाइन कोचिंग या इस तरह की कोचिंग में एडमिशन लेना रहता था तो उसके लिए इट वाज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू स्विच टू डिफरेंट सिटीज। एक मिनट आलोक रहने दो उसको। दे विल हैव टू स्विच टू डिफरेंट सिटीज, और उस सिटी में स्विच करके फिर वहां पे अपनी बोर्डिंग लॉजिंग का इंतजाम करना पड़ता था और फिर हेफ्टी फीस देनी पड़ती। बट ड्यू टू दिस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, आज ऑनलाइन कोचिंग ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है कि वही टीचर्स जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो आपको भी पढ़ा सकते हैं। सो इससे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। इसमें छोटी सिटीज के भी बच्चे भी अब आईटी आईएम्स या अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा रहे हैं। देन द नेक्स्ट वन इज, then the next one is travel tech startups. ट्रैवल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स क्या होते हैं कि इन द फील्ड ऑफ ट्रैवलिंग इंडिया में आजकल एक बहुत बड़ा मार्केट जनरेट हुआ है कि नाउ डेज वी आर इंजॉइंग ट्रैवलिंग। पहले क्या होता था कि जो लोग के पास इतनी इनकम नहीं होती थी जिस वजह से वो बहुत ट्रैवल कर पाते थे, तो आजकल ट्रैवलिंग हैज बिकम अ वेरी प्राइमरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे गर्मी की छुट्टियां हुई या विंटर वेकेशंस हुए, हम लोग फैमिली विजिट पे निकलते हैं। इनफैक्ट आजकल जो बुजुर्ग जो पहले अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाते थे, अब रिटायरमेंट एज में वो So we काफी, have technical glitch this side. the There's some slides are not electricity issue this side. We okay. got disconnected. Okay, I will wait for 2 We minutes. are not No able problem. to hear you or view any slide. We apologize. Hello. We regret for this inconvenience. And Hello, am I visible? hello. Hello. So we are very thankful for your innovative and motivating lecture. Let us call back, sir. Just give us a minute. Hello, sir. I am audible. Yes, you are audible. Okay, thank you, sir. So whether I can continue or just give me 2 minutes, I will wrap it up. Okay, sir. You can continue. So would you like to continue? Yes, just I am just So you can continue your talk. आवाज नहीं जा रही।
So you can continue with your talk. Sir, so please unmute yourself. Please unmute yourself. We are unable to hear you. So we are unable to hear you. We can see the movement, but not able to hear you. Now I am audible. Yes, sir. Now you are audible. Sorry. So You whose would like to organization? proceed? Uh, You would like to proceed, sir? okay, let's wrap it up. चलिए ठीक है, आपका भी टाइम काफी वो हो रहा होगा. So just a जब मैं time break में constraint, नहीं that's why. Ji. But sir, your talk was really informative and motivating for the student. आपने जो mindset की सबसे बड़ी जो बात की है, वो आज का present biggest need भी है और एक biggest hurdle भी है. आपने इतने मोटिवेटिंग जो एग्जांपल्स दिए, मेट्रोमैन से लेकर गूगल इनोवेशन एंड मीशो प्लेटफॉर्म, लाइफ एक्सपीरियंस इनोवेशन शेयर. आई होप कि जो हम जितने हमारे प्रतिभागी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट हुए होंगे. एंड आई होप सो कि whatever faculty it is, whether it is arts, commerce or specifically science students, वो स्टार्टअप की और अपनी राह बनाएं. और आपने जो आज वक्तव्य दिया हमारे बीच, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आई वुड लाइक टू कॉल our team member, Dr. Shri Akhilesh ji, to please convey vote of thanks officially. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच मैम. आदरणीय प्रोफेसर मनीष कुमार श्रीवास्तव जी गोरखपुर विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए थे, सम्मानीय वक्ता. मैं IQAC टीम की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं सर. आज आपने हमें पारंपरिक सोच से उद्यमशील सोच की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी. आपने समझाया कि केवल जॉब सीकर बनने के बजाय हमें जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में प्रयास करना चाहिए. आपके द्वारा उद्यमिता की मूल परिभाषा, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका तथा भारतीय अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्र के GDP में उनके योगदान पर दिया गया मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा सर. साथ ही आपने क्रिएटिविटी, इनोवेशन और रिस्क लेने की महत्ता को बहुत सरल शब्दों में समझाया. यह सत्र वास्तव में हमें सभी अनुभव प्रेरणादायक विचारों के लिए पुनः आभार व्यक्त करते हैं. आशा है कि भविष्य में आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा. एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you, Ashish. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot. I'm really sorry for the last minute technical glitches. It's okay, sir. थोड़ा सा ये technical glitches होते रहते हैं, and we all are concerned about that. Thank you so much. With this note, we hereby end this online session.
हेलो पार्टिसिपेंट यहाँ हमारा ऑनलाइन सेशन समाप्त होता है और हमारे एक अप्रोच इनवाइटेड लेक्चर होने जा रहा है, इसके लिए मैं आगे करूंगी। पार्टिसिपेंट जो भी जुड़े हुए हैं, आप आपके प्रेजेंटेशन जिनके बचे हुए हैं, अभी हमारे एक ऑफलाइन सेशन के बाद वापस से स्टार्ट करेंगे हम 2 बजे, तो लिंक एक्टिव रहेगी, आप लोग वापस से रिकनेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।